So I'll just do a brief introduction first. So hi investors, welcome to SOIC, and I hope so. This presentation's name is Buying the Pessimism, and today we have with us. Today we have with us a co-founder of Aurum Capital, and his name is Mr. Niteen Dharmawat. And I actually met sir 2-3 weeks ago. I think almost 4 weeks ago. तो पुणे में मिले थे. एंड पुणे में ऑलमोस्ट जब मिले तो जब बैठे एक साथ तो ऑलमोस्ट 3 या 4 आवर्स का डिस्कशन हो गया था. एंड द वे ही एक्सप्लेन्ड द केस स्टडीज, just it was extremely fascinating to sort of उन केस स्टडीज को सुनने में. And he has almost 25 years of experience in stock markets, and he has worked at CRISIL, and he has completed 2 levels in CFA, and he's also worked at the L&T group. And we are sort of excited for this session. Can we just drop a welcome Niteen sir in the chat box below, everyone? Right. Over to you, sir. You can share the presentation. Thank you so much, Ishmael. Now, host has disabled participant screen sharing. Can you give me that right? Just a second, sir. It's done. Thank you all for overwhelming welcome messages. Give me a minute, I'll just share the screen. Is my screen visible now? Yeah, sir, your screen is visible. Is the screen visible to everyone? Just drop a yes in the chat box below. Awesome. Perfect. Thank you so much, Ishmael, again. Thank you for inviting in this session, and thank you all for joining this session on a Sunday to attend a webinar on as weird a topic as pessimism. So Ishmael, I just wanted to confirm before we begin, should I speak in English or Hindi or combination of both? I am comfortable with either of or any of these ways. I think, sir, a combination of both works if everyone in the audience agrees. I think mostly English, and जहाँ पे भी सर हिंदी में आपने बात करनी आप हिंदी में बता सकते हैं. Very nice. Okay. Right, sir. I'll just turn my camera off. Okay. So I hope that you will find this webinar of use and help all of us to become wise investors. That's the whole idea. So let me move on. Let me just put on the camera screen in the side. Ishmael, do you want me to show the camera screen, or I can just? I think, sir, you can keep your camera on. It is. I can keep. Is it visible? Camera is visible? Yeah, sir, you're visible. Okay. So before we move to the important slide, here is an important disclaimer. We are a SEBI registered research analyst and investment advisor company, and we'll be talking or covering several case studies. And in this presentation, they are purely case studies. So there are no recommendation of any sort, including buy, sell, hold. We may have vested interest. We might have recommended some of this to our clients as well. So be sensible about this. Do not take any financial positions based on what we are discussing today. This is a brief about our company. Aurum Capital is founded by my partner Jiten Parmar and me. Together we bring close to 4 decades of experience in equity market and guiding fellow investors, mentoring fellow investors. The rich industry background of both of us, we have worked prior to starting Aurum Capital in corporate world. This helps us understand companies, complexities of businesses, and tipping points that make or break a company. So it's not just number crunching, but much beyond that. It's more of understanding the entire landscape of the organization where they are moving. That's the whole idea. We focus on business, strategic direction, and competitive landscape and the governance process, background of promoters, turnouts, to name a few, before we take decision. And often we believe that these are more critical items than just numbers. Both of us have waded through multiple bear and bull cycles of the market. So this is in brief the agenda of our presentation. We'll be talking about what is pessimism, problem of plenty while buying the optimism. So what are the issues that we face while we are buying during the optimism cycle? And there are
correction types. We'll be taking one example here of one of the meme stock. We'll be talking about price correction, time correction, and both time and price correction, which we have seen in this stock. Then we'll be talking about the buoyancy and decline, and then importance of human behavior. Very critical part in buying the pessimism. The human behavior is one of the most important part. Then what are the margins of errors? And then we'll talk about the framework for buying the pessimism. I think this is the most important slide of the presentation, wherein we'll be talking about debt, management actions, understanding sector, understanding company during pessimism, and how we should arrive of taking a decision to buy or to leave that company. And then several case studies while we are talking about buying the pessimism. So like IT companies or software companies in 2017, or US FDA ban on a pharma company, or COVID wave, and both the sides of the COVID wave. COVID wave, how it impacted hotel and tourism sector in April 2021, last year of second wave in India. It got picked. How this was impacted and how it has helped in picking up some of these stocks. And then the just other side of the example of COVID wave, video communications company from USA, and how it behaved because it was going through positively from the COVID wave. It got impacted positively, while the hotel and tourism sector was impacted negatively because of COVID. So how it has impacted both the sectors, we'll see those case studies. Then we'll talk about power sector crash in 2009. We have seen a significant run up in three sectors during 2009, from 2003-4 to 2009: infra, real estate, and power. We'll take one example from power sector, and we'll assume that we are standing in 2009. We are not in 2022. We are standing in 2009. And what should we do now? We have some numbers available till 2009. We do not have anything beyond than that. So can we see the troubles coming in this company? So that's the whole idea. And then I'll have some homework for you, wherein you can work on a case study from buying the pessimism perspective, and then we'll summarize. So this is in brief about the agenda. Let me move on to the first slide. So what is pessimism? A tendency to see the worst aspect of things or believe that the worst will happen. So what actually happens is when we are afraid, we do not see clearly. When we are surrounded by an emergency situation, our head quickly generates worst case scenario. It always happens. We start thinking about worst, whatever bad is happening with us. We do not see rationally. We see what we are afraid of seeing in such situation. So we'll imagine in such situation that the worst is going to happen. And critical thinking is always taking a back seat. It is always difficult, and it takes back seat, and it is almost impossible when we are scared. Critical thinking is almost impossible. There is no room for facts, so we ignore the facts also when we are having fear in our minds. So facts are ignored, and we are completely surrounded by pessimist thinking. And some of the examples are end of the market when corrections happen. We might have seen in March 2020 when COVID wave impacted and stocks started correcting across the globe, including in India. We started believing that it is the end of the market. We tend to ignore that it could turn around. End of sectors when darling sectors collapse. So like in 2009, the collapse has happened in power, realty, and infra. And we'll see one of the case studies of infrastructure sector, how it behaved during 2009 and post 2009. So was there any company which could benefit out of that downfall? End of company when events happen. So if anything has happened with company, it could be temporary. We are not putting our mind. We are not having a rational thinking, and company is negatively impacted. So we start believing that it is the end of the journey for the company, and that's where the opportunity comes. Evaluate each case independently and rationally. That is very important. So let me move on to the next slide. Pessimism in the market. How does it look like, and how to navigate? Let's look at some of the examples from 2020 itself. The news headline will look like this: biggest crash ever makes India worst performing market in the world.
And there is nothing wrong because media has a job to report. It's up to us how we are going to perceive it. This is 2020, March 24, when the bottom was made. Bottom was made on March 23rd. Okay, calls grow for BSE NSE to be shut down. Another news item. When the Sensex, crashed by 4,000 points and Nifty was crashed by almost 1,000 points, people started talking about closing down the market. The stock market post worst losses in history. Sensex crashes almost 4,000 points, coronavirus and lockdown. Again, the same kind of news will be visible on all the media channels. What are stock market circuit breakers? Now, not only the news is talking about the crash and closing down the market, but the news will also be towards negativity. They will start talking about what is market circuit breaker. So your mind will get occupied by such negativity which is surrounded in the market because of some event that has happened. And finally, if nothing is related with market, what will you see? What will you hear? What will you read? 23rd March again. Air Asia pilot jumps out of cockpit after passenger sneezes in Pune Delhi flight. अरे भाई पैसेंजर ने छींक दिया तो भी सब लोग डर गए और उधर वो पायलट तो कॉकपिट से निकला. Yeah, there is a video actually, very hilarious video if you see that. So if you talk about non-market news, you get to read this kind of things. So everywhere negativity will be surrounded. Not only that, but look at, and nothing against Hugo Arkin, who is the senior economist and country analyst for North America, Mexico, India, and Rabobank. March 24th news item, what is the headline saying? India is not one of the most attractive emerging markets right now. And that is where the bottom was made. Nothing against him. It is everywhere the same way because everybody wants to hear this news only. And FinTwit account with 4,000 plus followers, again he is asking for extraordinary situations to close down the market. Nobody talks about closing down the market when the market was moving up or making tops every day. They started talking about it when it started correcting. So that is how it behaves. So there are two sides. It's a kind of a optimism and pessimism, and both the sides you will see that there is no tomorrow. There is no tomorrow while panic buying is happening when the market is moving up drastically every day. It is making new tops. You start believing that there is no tomorrow, and when there is a panic selling, again there is no tomorrow because you will be ending up selling, believing that it's going to end everything. Whatever is remaining, wo le lo aur chalo ghar. So extreme thinking when the markets are moving up rapidly or when markets are collapsing. So it's an extreme thinking. Fear of missing out versus a fear of crashed out. दोनों ही बहुत खराब है. इनफैक्ट फियर ऑफ मिसिंग आउट इज बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसका ओवर वैल्यूएशंस देने की कोशिश करेंगे और जब मार्केट क्रैश होगा यू विल नॉट बी एबल टू गेट एन एग्जिट इवन. वो पेपर प्रॉफिट होकर रह जाएगा. So the market is like a pendulum that forever swings between unsustainable optimism, which makes stocks too expensive, and unjustified pessimism, which makes them too cheap. The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists. Very rightly, put it by Jason Zweig, who has updated the Intelligent Investor book. So buying the pessimism, meaning what? Buying when there is a carnage, when there is a significant corrections happening in the market. Apply your mind and not your emotions. Think rationally, then emotionally. Have a view to hold the business for next few years without significant returns. So you assume कि अभी कुछ आने वाला नहीं है इधर पैसा, यहाँ पे लेके रखना पड़ेगा और ये हमें सस्ता मिल रहा है और शायद सस्ता और हो जाए. So keep expectations to minimum. It will not create problem, and if you accept this in your mind, you will not have troubles. And expect the underperformance कि खराब होने वाला है और खराब होगा, हम खरीद रहे हैं और शायद और सस्ता हो जाए. तो ये अगर माइंडसेट लेके चलेंगे तो तकलीफ कम होगी. And then we'll not be booking losses unnecessarily. Even if we can't control, and more important point is, and these are all behavioral parts, even if we can't control our emotions, we can control the attentions we give to our emotions. अगर वो हमारे दिमाग को हम तकलीफ नहीं देंगे, हमारे ब्रेन को तकलीफ नहीं देंगे, ये बहुत हेल्प करेगा. And what are the areas from where we get all the negativity? It could be WhatsApp groups, Telegram groups,
social media, because we are connected everywhere, and everywhere the same kind of news will be getting circulated. If that is not enough, the traditional media, electronic media or print media, there again we have seen some of the examples. All negativity will be there, or distracted by emotions. So if still we are distracted by these emotions, then list down 3 activities that can keep your mind busy. For example, for me, act of random gratitude, it works beautifully. What does act of random gratitude? थोड़ा पागलपन लगेगा अगर हम act of random gratitude का बात करें, थोड़ा पागलपन लगेगा. कैसा होता है act of random gratitude? मतलब हम किसी भी चीज को थैंक यू बोले, किसी भी चीज को थैंक यू बोले, मतलब किसको थैंक यू बोले? वाइफ को थैंक यू बोले, उसको तो हमेशा ही थैंक यू बोलना चाहिए, तो थैंक यू बोले. दोस्त को थैंक यू बोले, उसको भी थैंक यू बोले. फैमिली को थैंक यू बोले, उसको भी फैमिली. नॉट ओनली दैट, रैंडम ग्रेट ऑफ एटीट्यूड, रैंडम एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स ये सीट पे बैठा हूं तो सीट को थैंक यू, ये पीछे का क्वेश्चन मिल रहा है इसको थैंक यू, ये मेरे हैंडल से उनको थैंक यू, ये टेबल को थैंक यू, लैपटॉप को थैंक यू, ये सब पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू. एक एक करके हम थैंक यू देते जाए, ये ग्रेटिट्यूड देते जाए, हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी है ये बहुत कम होती है. एंड बिलीव मी, इट वर्क्स beautifully in reducing the anxiety that we have in our mind. And then the second part is meditation. If you can learn the art of meditation, nothing like it. But even if we are doing directly meditation, our mind may not be, having ability to grasp or to focus upon the meditation part. So that's where act of random gratitude is the first thing, wherein you bring down the anxiety in the mind, and then you do the meditation. And of course, then you get involved in some of the hobbies, which could be, like reading books. I love to read books, so reading books, or maybe if you are having hobby of music, then you get involved with music, or if you have a hobby of playing some musical instruments, you start playing that musical instrument. So whatever is your hobby, get involved with that. Put your attention away from the carnage which is happening, and bring your mind in your control, so that you can act rationally rather than irrationally during such carnage. Now there are correction types, and this is a meme stock I was talking about in the agenda. This is very easy to guess. This is ITC I'm talking about, and there is no recommendation again over here. It's just a case study that I'm covering. Please do not consider this as case study in any of the ways. Please do not consider this as recommendation in any of the cases. This is just a case study. So it has seen 5 years of stagnation. From 2017, it was at 278. It is 261, 265, around the same level. 5 years, no returns. And that's where it became meme stock. And especially 2019 onwards, it has got corrected, and then it bounced back, and now it is 260. So people started talking about it, making fun of this stock. They were looking at it as the correction or the stagnation of last 5 years. They started talking about all the other things with this company. But then they've forgotten to see one thing. Before this 5-year period, that is till 2017, how it has behaved. So look at it from 2007 to 2017. That is a period of 10 years. During this period, this stock was 6.6 bagger, which is 21% CAGR for a period of 10 years, plus dividends. It pays handsome dividend also. So nobody talks about it. If you look at everywhere, if you look at Twitters and those people who are making fun of this stock, they also don't talk about this, that it has been a multi-bagger. Now it has become multi-bagger. It is taking its own time. It has become stagnant. So when it was becoming multi-bagger, you give a time to it to relax, and then you enter into it. The second part was before this 10 years, that is a period prior to 2007-8, those 5 years. Again, it was having its signature. There was no price rise. It was almost at the same level. And if you look at prior to that, sorry, I clicked it on the wrong. Okay, yeah. So prior to that, it was again a 4-bagger in 5 years plus dividend. So 4-bagger, then 5 years stagnation, then 10 years of 6.6 bagger. So you look at it rationally rather than irrational, criticism of the company. You look at it from the valuation perspective. You look at it where it was 5 years ago and why it is stagnant now. So it has shown time correction, it has shown price correction, it has shown time and price correction. All three are available in this stock. There's another one.
This is infrastructure sector that I was talking about. From 2003-4 to 2009-8-9, there were three sectors which were like darling of the market: power sector, realty sector, and infrastructure sector. Infrastructure sector example is here. If you look at the center, the kind of upside which was seen in this stock was humongous. They became multi-bagger. But how is the situation post Carnage? So after Carnage, they all came down to earth. है ना, उसमें पुंज लॉयड, जेपी एसोसिएट, जीएमआर, आईबीआरसीएल, they lost almost 95 to 98%. अगर 1 लाख रुपए डाला था ना, तो उसका कीमत अभी 2,000 रुपए, 5,000 रुपए रह गया. बोलते हैं ना, 1 लाख रुपए डाला था मैंने, 5 करोड़ बन गया. वो 1 लाख रुपए जो है ना, वो 2,000 और 5,000 रुपए बनता है अगर आपने उसका वैल्यूएशंस पे ध्यान नहीं दिया, और if you entered at the time of optimism. So when optimism ends, when the tide goes out, you know that who is swimming next. Very rightly said by Warren Buffett. So what should I do as an investor? Should I not buy this at all? When should I enter into such stocks? If I had to, what should I do so that I maximize my return? So there is another example from infrastructure sector again, and we have seen how wealth was lost 95% to 98%. So was there any company which has done phenomenally well or pretty well during this and post this period? There is one company. It has again seen a correction of 50%. It got listed around 2009 only, and immediately after that, when the crash happened, it also got butchered. So it has seen a price correction of almost 50%, rather more than 50%. So once that is seen, the second time again it has seen between 2010 to 2013-14 period. Why? Because if you remember that period, the infrastructure projects were not coming. There was severe crisis in terms of project allocation for infrastructure sector. So again, it has seen a 50% correction. But what has happened, if you look at it after 2014, and the date is also mentioned from 16th May 2014. It's a very important date. This stock has become 23 baggers in 7 years, 11 months, less than 8 years. 16th May 2014 I mentioned because this is the date on which the Lok Sabha results came in, and things started changing, and people started looking infrastructure more positively. So during those days, we used to have monthly meetings in Pune, and infrastructure was one of the sectors I mentioned that should do well, and this company has done phenomenally well. It was recommended in our advisory as well. I'm also personally holding, and if you look at this 50% correction, the second side of 50% correction, if you look at it from there, in 9 years, less than 9 years, 8 years, 9 months, it is a 56 bagger. Not only that, the first correction, if you could buy at that time, it was 133 baggers in less than 14 years. Huge wealth was created again from the same sector, infrastructure, where we have seen almost 95 to 98% correction. So how it happened and what should I do? So as an investor, should I consider buying it over here or here? Or even if I buy it here, maybe 2014, still it is giving me 56 times return. And should I buy this kind of stocks or should I buy this kind of stock? So that is what we are going to look at. Okay, we'll go to that framework, but before that, one more important aspect of human behavior. What we are saying is, to win over algo trades, there is only one way: control your emotions, because otherwise algo will not allow you to win in this game. If you are developing some algos, it might also become redundant after some time, because there are many others who might be doing. But if you can control your emotions, things will be in your way from the long-term perspective. So it's a small story of a stock which became 16 bagger, 16x in just 2 days, not 1 month, 1 year, or 10 years. It's just 2 days. So what has happened? Elon Musk, who is the founder of or the owner of Tesla, who is now owner of Twitter, he tweeted, "Use Signal." So what he actually meant was the equivalent of WhatsApp, Signal, a social media platform.
he mean to say that, most likely that is what I understood. But people started searching for signal in the market. The algos started working because signal was in trading, trending, and then algo found out one company, Signal Advance, which was trading at $0.6 per share, and everybody, as it happens, when the trend was there, they started buying Signal. So it became 16 baggers in just 2 days. Even the owner of the company would not be knowing that how it has moved up so fast. So in 2 days, it went up from a penny stock, $0.6, less than $1, to $10 stock, just in 2 days. Now buying the pessimism, important parameters to consider. Now, this is the framework. This is one of the most important slides. Let's put our attention over here. Buying the pessimism. So sector or company is out of favor. What do you mean by out of favor? Out of favor is no one wants to talk about it. There is a hesitation to post about the company or sector, as people may laugh. If I say that, boss, I have bought this company, and people will say, why did you buy? Because nobody is buying this sector. You'll say that, no, I'm looking at it from long-term perspective. There is a value, so I bought it. And maybe after a couple of days or weeks or months, the stock is corrected further. Then they will come back. Okay, what are you doing now? The stock is corrected. No, I am adding more, you will say, and you will look foolish that you are buying again. You are already in loss, so you buy more, and after some time it may again correct, and we'll see in some of the cases that have happened. And again you will say that, no boss, I'm still buying, and they will again laugh at you. Because if you start facing such situation, you will not like to post about it. आप बात ही नहीं करोगे किसी से, आप चुपचाप खरीदने की कोशिश करोगे, या शायद चुपचाप भी नहीं खरीदोगे. So valuations are at historical low levels. There is a hesitation to talk about the stock. Nobody wants to touch that sector or that company. If it is not out of favor, then end of the story. You don't need to look at that. It's not working. If it is yes, then there is a survivability test, and we are looking at now survivability test. ये sector या company survive करने वाला है, नहीं करने वाला है. तो सबसे पहला point है इसका, is there a permanent disruption? Permanent disruption मतलब for example typewriters in 90s, okay, वहां पे परमानेंट डिसरप्शन हो रहा है और आपकी टाइपराइटर की कंपनी बिल्कुल सस्ते दाम पे अवेलेबल है, आउट ऑफ फेवर है, nobody wants to touch it, and you know that there is a permanent disruption. If it is yes, then end of the story, don't touch that sector. If it is no, there is no permanent disruption, look at the debt level immediately. How high is high? So अगर debt level high है, अगर manageable नहीं है, बहुत high है, तो उसको छोड़ दो. अभी कितना हाई हो, क्या हो, तो इसके लिए मेरा एक सेपरेट प्रेजेंटेशन है, which is available on YouTube as well. I presented it in CFA forum. There I talked about this and the next parameter extensively with several case studies. So अगर बहुत हाई डेट है, मैनेजेबल नहीं है, छोड़ दो इसको. और अगर वो हाई नहीं है, मैनेजेबल है, लो डेट है, so look at the cash flow of 5 good years. Good years means stable years. When this company or this sector was not out of favor, look at the cash flow, especially operating cash flow. अगेन इसके डिटेल्स में जाना है तो वो प्रेजेंटेशन एक सेपरेट प्रेजेंटेशन है, उसमें बहुत सारे केस स्टडीज भी हैं, वो देखना चाहिए. बट अज्यूमिंग दैट यू अंडरस्टैंड कैश फ्लो, यू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एंड it is good in those years and it is healthy, then you look at is there a large seller. So survivability test हो गया, उसमें डिसरप्शन देख लिया, डेट देख लिया और कैश फ्लो देख लिया. नाउ लुक एट is there a large seller. कई बार कंपनी में लार्ज सेलर्स होते हैं. What do you mean by large seller? Large seller could be, the people, those who are holding more than 1%. They get reported every quarterly because SEBI has a rule, and this gets published by the company, and these are easily available. अगर उसमें से दिख रहा है कि कोई सेलर है, सेलर लार्ज सेलर है मोर देन 1%, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं. इंस्टीट्यूशन में लार्ज सेलर है और वो अगर 5-7%, 8% कंपनी में होल्ड कर रहे हैं, देन देयर विल बी सिग्निफिकेंट प्रेशर बाय देम, एंड द स्टॉक में कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म. सो वेट फॉर दैट. सो रिकंसिडर और वेट if there is a large seller, and look at every quarter and look at the numbers, the quantity which are getting traded every day, the kind of volume which are happening every day, the kind of deliveries which are happening every day, and then after a couple of months you'll come to know अगर उसका 1% के आसपास आ गया मतलब अगले क्वार्टर में ये जाएगा, अगर वो कंटिन्यू सेल रहा तो.
तो अगर वो हो गया है, सेल हो गया है, लार्ज सेलर नहीं है या लार्ज सेलिंग उसका खत्म हो गया है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हाउ मेनी सर्वाइवर्स आर देयर? अगर इसमें कम सर्वाइवर है इस सेक्टर में, स्पेशली सेक्टर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सेक्टर्स में कंसोलिडेशन हो गया, मतलब आज अगर 50 प्लेयर हैं और वो बच के 20, 15, 10 ऐसे कम सेलर्स हो गए, सर्वाइवर्स हो गए, कंपनीज ही सर्वाइव नहीं कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ फेवर था, ये सेक्टर्स मरा हुआ था और उसमें बहुत ही खराब हालत थी, प्रॉफिट्स नहीं बन रहे थे, कंपनीज ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस कर रही थी, तो फिर आपकी चांदी होने वाली है यहाँ पे, अगर फ्यू सर्वाइवर्स हैं तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है. 2017 का एक एग्जांपल है. 2017 में steel sector was completely out of favor, and it was out of favor from 2013-14 onwards, for a long time actually, after 2009, if I strictly speaking that way. But 2017 was very critical year. It has seen all of this, है ना. स्पेशली 2017 में जब आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे कंपनीज, जिन जो मेटल की कंपनी, स्टील की कंपनीज थी, जिन पे डेट ज्यादा था, वो एनसीएलटी में जा रहे थे, और एनसीएलटी में जा रहे थे, एंड इट वाज गेटिंग बैंकक्रप्ट, एंड दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्टील. सो कंसोलिडेशन हो रहा था, है ना. कंसोलिडेशन हो रहा था तो बहुत ही कम सर्वाइवर बच रहे थे, लार्ज सेलर्स थे वो निकल रहे थे कंपनीज में से. और उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है ना, वो बहुत ही अप एंड डाउन रहते हैं ये कंपनीज के. बट अगर आप गुड ईयर्स में ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा. और अगर आपके डेट लेवल जो है वो मैनेजेबल है, तो डेट लेवल जिनके मैनेजेबल है वो बहुत ही बढ़िया है. और सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी यहाँ पर, हेजिटेशन टू पोस्ट अबाउट दिस कंपनी और सेक्टर. सो what has happened during that period in 2017 when I was evaluating this sector, I I I reached out to many people who understood this sector from fundamental perspective. Very interesting incident. So this was a pallet manufacturing company, and I didn't know much about pallets, so I was trying to understand it. So मेरे साले का साला, मतलब my brother-in-law's brother-in-law, he was there in one of the companies. जो कंपनी में देख रहा था वो नहीं, वो तो अनलिस्टेड कंपनी में था. तो वो पैलेट मैन्युफैक्चर भी करती थी स्टील के साथ साथ. तो मैं उसको पहली बार गया, बात किया उससे, मैंने कहा मुझे समझना है, तो उसने मुझे समझाया. और उसने बोला क्यों समझना है, तो मैंने कहा भाई मुझे ये सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, लेना चाहिए मुझे स्टॉक्स. तो वो क्या बोला मालूम है, ही इज फ्रॉम द सेक्टर, ही इज फ्रॉम स्टील सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैलेट, एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. व्हाट डिड ही से, बस मेरे पास ये बोलने को है कि अभी हमारे पास खाने के लिए, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, एंड यू वांट टू बाय stock of our company, and the bottom was made during that time, because when the insiders are also facing the heat to that level, then consolidation has happened. Cash flow started looking at it, and there are some excuse which will come in. China का एक excuse आएगा, चाइना वाले ने डिमांड बढ़ा दिया, कुछ ना कुछ excuse होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कहीं और कंसोलिडेशन भी हो रहा होगा. तो फ्यू सर्वाइवर मिले और वो वहां पे मल्टीबैगर हुआ स्टॉक. वो स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स मल्टीबैगर हुए इस सेक्टर के. एंड देन यू लुक एट इट फाइनली कि मैनेजमेंट ये डिस्ट्रेस सिचुएशन में बाय कर रहा है तो बहुत फायदा है फिर तो. कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं क्या, अगर ये जनरली कॉस्ट रिडक्शन होते हैं जब टाइम बहुत खराब होता है, व्हेन द टाइम इज रियली बैड एंड यू आर फेसिंग द हीट, यू विल ट्राई टू रिड्यूस एंड स्क्वीज so that you can survive. So cost reduction will be visible. Consolidation, we already talked about it. So consolidation like NCLT के cases हो रहे थे उस time, तो companies के consolidation हो रहा था. Low capacity utilization is again a very important hallmark when the sector is out of favor. So 20-30% के utilization पे रहेंगे, जहाँ EBITDA level पे loss होने लगेंगे, है ना. And then you see one sign, one hope कि demand improve हो रही है. अगर demand improve हो रही है, you can bet on that sector. डिमांड इंप्रूव हो रही है, कम सर्वाइवर है, डेट लेवल कम है, कैश फ्लो अच्छे टाइम पे ठीक है, और लार्ज सेलर्स अगर बाहर हो गए हैं, यू जस्ट गो एंड बाय दैट, गो अहेड. So this is in brief about the framework. I hope that it is clear and I made sense over here. Just give me a minute. Now, moving on to the case studies now. Buying the Pessimism case study from IT side, IT companies in 2017. Everyone is saying that IT sector is dead now, as we do not do only manual jobs. So we are not doing any mission critical work.
That is our feeling. Since I come from corporate sector, I worked in IT companies. My partner has worked in IT companies. We know that whatever work Indian IT companies are doing, we may consider this as body shopping or not having, not adding value. We can demean this work, but at the end of the day, these companies are getting business primarily because they are adding significant value to their customers. If they are adding significant value to their customer, they are going to outperform. It's not only कि product company पैसा बनाती है, services companies भी पैसा बनाती है. Product companies की risk बहुत अलग होती है, services companies की risk बहुत अलग होती है. Now look at how the negativity would come in. This is the post by ex JP Morgan, HDFC Security economist, MBA finance, ranked in Asia Money. I white label because names are not really important, because everybody was saying the same thing. It was August 18, 2017. In last 3, and it was the day when Vishal Sikka was asked to resign from Infosys. So she tweeted, in last 3 years, Vishal Sikka Infosys stock rose 21%, while TCS fell 1%. Six Sikka saga reflects feudal mindset of promoter like Murthy. Somebody is giving lecture to Murthy because the sector was not performing. So this kind of news will come in. Now look at the second part. Nomura's FIAs are downgrading IT companies. So this is again June 8, 2017. Nomura downgrades TCS stock under pressure today. Explains the rationale behind the downgrade. So media is also reporting the similar kind of incidences. There's another media report which says that based on June quarterly performance, just one quarterly performance, the TCS stock can be expected to fall with a third when trading resumes. So the bad results have come, everything happens together, which is bad. So Nomura will be downgrading, Vishal Sikka will be resigning, TCS will be producing bad results. And here is one tweet by a fund manager, and somebody tweeted to him saying that, "Sir, subah subah Z business par aapke darshan ho gaye." Okay, this was August 26, 2017. So what did he reply? He said that, "So now you know what to do with Infi on Monday." So basically, he was very negative on the IT sector, and that is what he said. और जो सबको अच्छा लगता है फंड मैनेजर, तो वही बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो चीज अच्छी नहीं लगती है, जैसा मैंने शुरू में बोला था, अच्छी नहीं लगती है, वो आप पब्लिकली बोलने में डिफिकल्टी होती है आपको. और ये डेट आई रिमेंबर 26 August 2017 because I made a presentation. It was Saturday, and here in Pune I made that presentation, and in that presentation somebody asked me, आपको कौन सा सेक्टर अच्छे लगते हैं? तो मैंने वो 2 सेक्टर बोले थे उस टाइम. एक बोला था IT एंड सेकंड बोला था फार्मा. वो बोला, सर ये तो कोई सेक्टर है ही नहीं, ये तो कोई देखना ही नहीं चाहेंगे, ये तो पूरे मरे हुए सेक्टर है. मैंने कहा ये इसीलिए तो देखना चाहिए ना. And again, when this happens, that's where the valuations are very attractive. You look at just the survivability aspect of the sector, and if they could make money, then you will be having, pretty good decent returns. So I'm talking about the large companies like Infosys, very large companies. From 2017, it has actually doubled. बिफोर कोविड, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि अरे कोविड का वेव आ गया ना, इसलिए डिजिटल बिजनेस आ रहा है, इसलिए स्टॉक मल्टीप्लायर हो गए. ऐसा नहीं है. उसके पहले ही कोविड स्टार्टेड इन 2019 नवंबर दिसंबर. ओके, बिफोर दैट इट वाज 2x जस्ट इन 2 years में 2x. मतलब कितना CAGR होगा आप जोड़ लो उसका. The stock was down 33% in a year from 2016-17. एक साल पहले वो 33% डाउन था. And COVID did help to get mojo back. But even before COVID, it was already up 90%, as I said, when there was negativity around this sector. And nobody wanted to talk about it publicly to own this sector. Experts were citing lack of innovation, no product focus, possible death of the sector. They were saying that it is a dead sector, don't go over there. We may not be in a product space, as I said, but we add significant value to our entire ecosystem in IT, and that is where the business comes. And difficult period did help companies, but they to put their acts together, as we have seen in steel
or we would see in hotel sector how the companies put their acts together, and something similar was visible over here in IT sector as well. Now when the mojo is back, everybody started talking about and started giving the benefit to digital revolution and huge growth. That has come after that. Of course, it has definitely helped. But before that also, when the valuations were attractive, we were buying Pessimism. It helped to make decent money. And there are certain things that never change. So today it is 1953. So from 442 to 953 is almost 4 baggers in just 4 years, 3-4 years. This is again Infosys P&L, and if you look at the sales wise from 2016 to 2018, I not taken beyond that because this was the period of pessimism. So nothing much has changed, but the perception was that it is not going to do well, and things started looking bad for them. This sets the tone for the market participants, and price drives the perception. When the price is down, everybody will discard that sector, and reasoning of course takes a backseat when emotions are running high and emotions are on the forefront. And we already mentioned that next 2 years the stock was up almost 100%. Same was the story with TCS. So again 2017 it was at 1165 and it was 2x, that is 2183 in 2 years. And from 2018 till date, again it has done pretty well, and now around 35-3600. So P&L wise, as we have seen in case of Infosys, here also the same thing gets repeated, and the stock is up again 90%. No time. Now we are moving to the next case study of Pharma Company, Ipca Labs. It did give 4.4x return, 40% CAGR, and just 4.5 years. And 40% CAGR is pretty good, pretty decent. And if you are buying the Pessimism, this is what happens. Let's look at the profile of Ipca. So Ipca is a very old name. It was incorporated in 1949, almost 70-year-old, 72, 73-year-old company. And the name was the Indian Pharmaceutical Combined Association. The short form is Ipca. At one point of time, Bachchan family, Amitabh Bachchan and his brother Ajitabh Bachchan were the part of the founders of or the promoters of this company. Fully integrated manufacturer with 350 formulations and 80 APIs. Now, most of the people may criticize कि यार ये API नहीं है, ये formulations है. API जैसे सब धंधा देने वाला है, formulation नहीं देने. API is 30%, formulation was 70%, but it is one of the 20 largest formulation companies in India. So pretty large in terms of formulation again. And it produces over 80 APIs and 12 production facilities, exports in 79% of APIs, intermediates, business to 70 countries. So it has global presence, focus on backward integrations, superior supply chain reliability, and cost competitiveness. Again, in formulations, it's a leader in a variety of sectors, manufactures over 350 formulations, and it has leading brands under its belt. And the important point which is highlighted over here is 3 manufacturing sites still under US FDA import alert, and that's where the pessimism comes. We'll see the implications of it. And it has a geographical mix. It's pretty diverse. Europe 28, Africa 20, America 21, Asia 17, CIS 7, and Australia 7. Now if you look at from 2009 till 2014, this almost a period of 5 years. In 5 years, it was a 15-bagger stock. So not only this was the post 2009 crash, when the entire market crashed, especially for realty, power, and infra that we talked about. After that, people started looking at FMCG and pharmaceutical. So here, this stock, which was available at a decent valuation that time, not only this but other pharmaceutical companies, they seen huge rally. Again, the optimism, it rode that optimism and became 15-bagger in 5 years. But what has happened after that? After 2014-15 period, the entire pharma sector picked out.
So if you look at not only IPCA but other pharmaceutical company, whether it is Sun or Lupin or other companies, they all picked out during this period of 2014. The price was at 450. It is adjusted to that split that has happened in the stock very recently. So it was at 450. Otherwise, it was 900. So it got picked out, and then the bad news again came during that time. So US FDA. So when the bad starts happening, it does not happen in one or two shots. It rains. It pours. So US FDA bans imports from IPCA labs plant in MP in 2015. Okay, 2015 में यहाँ ban आ गया इसका. Then US FDA यहाँ पे कहीं ban है. Then US FDA issues import alert to 2 plants of IPCA labs again in 2015. Ban भी आया, alert भी आ गया. Now, during that time, I bought a small quantity of IPCA at around 310. So it was already down from 450 to 310 or 900 pre-adjusted price to 620 or 600 level. And I shared this with a few of my friends. यार IPCA लिया है, तेरा कुछ opinion हो तो बताना. कुछ तो बोला नहीं, लेकिन उसके बाद वो गिर गया. अब वो अगले साल 2016 to 18 again the next 2 years were very difficult for this company. I just bought a small quantity. So small आज लगता है क्योंकि आज हम उस टाइम नहीं पता था कि यही 100% होगा या ये 10% है. बाद में और खरीदा इसलिए वो 10% हो गया. तो वो उसके बाद वो ब्रेक्सिट आ गया. अभी हमने देखा था पिछली साइड पे यहाँ पे यूरोप में they were doing 28% business. So when Brexit happened, again it got impacted very severely. Then anti-malaria drug, which is chloroquine बोलचाल की भाषा में, and it is one of the largest manufacturer in the world. And who buys this chloroquine till 2020? It was bought by WHO. And where do they sell? They sell it in African countries at no cost because malaria है वहाँ पे, तो इसलिए दवाई लगती है. तो ये खरीदते हैं IPCA से. लार्ज टेंडर्स हैं, ग्लोबल टेंडर्स हैं, जिसमें IPCA बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, तो उनको वो बिजनेस मिलता है. तो ये यहाँ पे वो भी बैन है. और उसके बाद रही सही कसर थी ना ये 2016 से 18 में यूएस चाइना का ट्रेड इशू हुआ. आपको पता ही होगा, यू माइट रिमेम्बर, ट्रम्प आके रोज कुछ ना कुछ बोलते थे चाइना के खिलाफ, एंड stock market used to perform very negatively after that, and it was impacting IPCA as well. And then Chinese raw material supply and price issue also came in because they used to import some material from China, so that was again impacting, and their cost was going up. And during this period, from 2015 to 2018, I might have participated in some of the conference calls, and I used to ask only one question, primarily one question, कि बॉस तुम्हारा यूएसएफडीए का क्लियरेंस का क्या हुआ, यूएसएफडी का क्लियरेंस का क्या हुआ. क्योंकि मेरे को लगता था यूएसएफडी का क्लियरेंस हो जाएगा ना तो इसको सब झंझट से मुक्ति मिलेगी और ये शायद ऊपर जाएगा, इसको फायदा होगा इसका. And during this period, I also bought almost 90% of my quantity, 30% at 230 average, 20% at 210 average, 40% at 320 average, 16, 17, 18. So 15, 16, 17, 18, I was continuously buying. And again, my friends used to ask me, अरे भाई तूने खरीदा था ना, वो शाना बन रहे थे, अभी क्या हुआ उसका, गिर गया. मैं क्या बोलूंगा, अभी और गिर गया है. तो when I started buying pre-split price at around 600, तो वो नीचे आ गया 550 पे, तो मैंने थोड़ा और ले लिया. वो 500 पे आ गया तो मैंने थोड़ा और ले लिया. 450 पे आया, मैंने थोड़ा और ले लिया. तो वो हर बार नीचे गिरते गया. ये पूछते रहे क्या कर रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ यार, अभी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो लेते जा रहा हूँ. So you feel you get into a situation where people may start laughing at you कि यार ये कैसे खरीद सकते हैं जब इतना गिर रहा है तो. But this is the beauty of pessimism. Now look at the numbers. 2014-15, the business got completely impacted. Look at this, and we are looking at P&L. We'll look at balance sheet and cash flow also of the company. 3,282 crore revenue, which was the peak. And if you look at 2010, यहाँ पे था 1,567 करोड़ का, और यहाँ पे 3,282 करोड़ का revenue. Almost top line was up by 2x. Bottom line was up by 2.33x, 205 से 479. और ये पीरियड में स्टॉक कितना बैगर हुआ था, अभी हमने देखा था इसकी प्रीवियस स्लाइड पे, 15 बैगर हुआ था ये पीरियड 2009 onwards. 15 बैगर हुआ था. Now look at period from 2015 till 2000, and stock was up 15x from 2014 till 2021. Top line is up by 1.64x, almost in line with the previous, slightly lower than that.
but the bottom line was almost same, rather more than that. 2.33x हुआ था या 2.37x हुआ है, but stock is up 2x, but in between बहुत कचरा हुआ है यहाँ पर. तो अगर मैं यहाँ खरीदूं, यहाँ खरीदूं, यहाँ खरीदूं या यहाँ खरीदूं, जब मैक्सिमम पेसिमिज्म है, यहाँ पेसिमिज्म था, अगर मैं यहाँ खरीदते जाऊंगा तो इसका रिटर्न कैसा होगा, उसका रिटर्न बहुत फर्क आएगा. Return will be 4.4x and the CAGR will be 40x. XIRR will be 40x because you have not bought it over here. You have delayed your buying, and you are buying when the pessimism is there, and you are buying in tranches during that period as well. So the cash outflow will be different for you, and that's why the XIRR, which counts both the time and the amount that you are investing, gives you a very healthy return of 40x during this period of just 2-3 years. Now the balance sheet, 2014, our balance sheet is very strong. Look at the share capital, and again, this is not a recommendation. We are just covering this as case study. I'm not holding this stock anymore, and I'll tell you what I had done with this. And I'm not saying कि इसको बेच दो, ये आप अपना खुद का evaluation रखना चाहिए. Share capital was 25 crore during all this period. Okay. And fixed assets during this period, see, fixed assets have gone up and capital work in progress was also going up. It means company कुछ तो अपना assets बढ़ा रही है, company अपने manufacturing plants को, facilities को बढ़ा रही है. वो जब बढ़ाएगी, इसका result जब आएगा, वो बहुत अच्छा हो सकता है ना. Difficult time. Again, the cash flow, very important. We talked about operating cash flow, and if you want to know more about operating cash flow, there is a separate presentation, as I mentioned in the beginning. You can look at that presentation as well. The operating cash flow has always been very strong, very, very strong. But look at investing cash flow, it is negative. It means cash is flowing out of the company and they are making investments, the large investments which are happening over here. It means they are building facilities, factories and things like that, so that it reaps the benefits in future. So अगर peak revenue अगर हमने यहाँ देखा था 3,200 करोड़ का था, वो definitely ज़्यादा ही, वो 2021 में 5,400 करोड़ का आया है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 5,700 करोड़ के आसपास का है. ओके. और अगर एबिटा भी देखेंगे तो ये 23 से 17 हुआ, 10 हुआ, and then again started looking up, and again now it is 29%. Peak एबिटा है 21 में. Now corporate actions. So the company got listed in 1994. It has given a bonus issue in 2005. Then 2009 it has done some buyback. 2009 again buyback. Some amalgamation of small company they're done, and then they have converted warrants 2020 September at 953 pre-split price, that is around 425 post-split. So they have converted this warrants and subdivision of shares they've done recently. And look at dividend. They were dividend paying all these years except 2016 when they were going through difficult period. Otherwise they were paying dividend, and the dividend percentage also started increasing. So 50 paisa, dividend amount was increasing, 1 rupee, 125. Small amount considering to, in comparison to price, but 2015 has started looking up. So they were in pressure, so the dividend got reduced, it got to 0. Then again they started paying 50 paisa, 1.5, 2.5, 4 now. Now look at how it has happened for the investment that I made. So almost 4 years investment. I exited last to last year rather, in 2020 and I exited, and it was a 4.4x return with 40% CAGR in 4.5 years. And as I was mentioning that every call I used to ask about US FDA issue, it did not get resolved till date. Then what happened with this company? How it did perform? So operation in other countries started showing results. So they started putting thrust or impounds in other locations, which started working for them. And 2020 game changer was COVID. That worked for them. If you remember, Trump talked about chloroquine or hydroxychloroquine in the US market and how it is going to help the COVID patients. उस समय पे इसका ये जो दवाई था उसका धूल भी शायद नहीं बचा होगा फैक्ट्री में, इतना बिका. सो पीक मार्जिन है 2020 के, जो हमने अभी बात किया था प्रीवियस स्लाइड पे, 2020-2021 में पीक रेवेन्यू आया 2021 में, जब वो कोविड के बाद का जो ईयर था उसमें पीक एबिटा मार्जिन आया, पीक रेवेन्यू आए और पीक नेट प्रॉफिट आया, और स्टॉक भी पीक बना उसका 2020 में, ये पीक बना वहाँ पे.
तो ये 2400 रुपए के आसपास, 2000 से 2400 रुपए के आसपास आया, विच इज प्री स्प्लिट प्राइस. So stock touched a peak of 1250, which is around 2500 that time, and super profit was made in that, and peak revenue, peak profit, and peak share price. All this were together was asking us to exit. So finally, did we consider recommending it to our clients? We did actually consider this recommending to our clients. It was at around 425. Pre-split price was 850. It was trading at around 910, 950. And we thought of, अगर 425 आ गया या 850 उस टाइम का लेवल आ गया तो हम रिकमेंड कर देंगे. सब कुछ रेडी था. एक दिन आया, बट वो उसी दिन वापस चले गया. We couldn't get time also to recommend it, and we missed it. आप बोलेंगे यार क्या 20-25 रुपए के लिए आप पहले शायद ज्यादा में कर देते तो चलता है. But that is what the discipline is. We might end up making mistakes at somewhere else. So we might have missed over here, but an opportunity over here, but we might get saved if we are not doing value buy. So that's where the value buy is. We might have bought something else which could have done equally well. But we did really consider this stock from the recommendation perspective. So now look at buying the pessimism, and there are some case studies from hotel and tourism sector. And if you remember, April 2021 was really hard on India. This was the second wave peak in India. I'm sure that every one of you must have been impacted in some way or the other. And it has impacted the sector very negatively. And their survival was in question because nobody was traveling. Forget about traveling, people were not stepping out of their homes. So hotel and tourism was completely a dead sector that time. So look at the 10 companies, hotel companies of India. These are all listed companies. Either they are hotel or they are serving tourists in some ways, like Delta or Wonderla. So again, this is not a recommendation of any sort. We are holding these companies. We have recommendations still in these companies. The total market cap during that time was just 19,000 crores. In total outstanding debt, that was around 10,000. But that was also not very large, but total market cap was just 19,000 crore during the peak of Corona. And it was around 5-6 months after I sold out my IPCA holdings. So IPCA was at around 27,500 crore market cap. अरे पूरा होटल का बढ़िया 10 कंपनी तुम्हें 19,000 करोड़ में मिल रहा है, और अगर इसको डेट भी जोड़ दिया तो 29,000 में मिल रहा है, which is equivalent to IPCA का मार्केट कैप और लेस देन IPCA का मार्केट कैप. और आपको क्या मिल रहा है? 55,000 रूम्स मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं उनके, आइकनिक ब्रांड्स मिल रहे हैं उनके. आज एक घर बनाने जाते हैं तो 2 करोड़ लग जाते हैं. इनका एक एक रूम की कीमत 2-2 करोड़ होती है. अगर आप इनका रूम की कीमत देखेंगे 5 स्टार्स की तो 2 करोड़ के आसपास बिकती है. आज से कुछ साल पहले वो 1 करोड़ थी. इन्फ्लेशन वगैरह सब एडजस्ट होने के बाद अब 2 करोड़ का पर रूम का कॉस्ट है. मतलब 1,10,000 करोड़ का सेट आपको 19,000 करोड़ मिल रहा है. रस्ते का माल सस्ते में मिल रहा था. And average room rent was less than 3,500 rupees. 3,500 रुपए में कोई लेने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं. ऑक्यूपेंसी was 20-30%. वो भी ऑक्यूपेंसी कौन सी थी? जो कोविड पेशेंट्स के थे उनको वहाँ रुकने को मिल रहा था, या कहीं से बाहर से ट्रेवल करके आए होंगे तो उन्हें रुकना था वहाँ पे. So occupancy was all time low. ARR, average room rent, was all time low. No one wanted to talk about this sector publicly. I am telling you, nobody would talk about this sector publicly during that period. Now, what has happened today? Today means it's just 11 months, not even, no, we have completed 1 year now. So 1 year, 1 month, from 19,000 crore to 66,000 crores. Completely changed. और IPCA का मार्केट कैप जो 27,000 करोड़ था वो रिड्यूस होकर 25,000 करोड़ हो गया, क्योंकि उसका पीक वैल्यू बना, पीक प्राइस बना, पीक उसका रेवेन्यू है, पीक उसका एबिटा मार्जिन है, पीक उसका नेट प्रॉफिट आया, और वो स्टॉक वहाँ पे पीक हो गया था उस टाइम पे. अभी कुछ नया होगा तो आई डोंट नो, बट 25,000 crore is the market cap for IPCA, while the hotel sector, which or the tourism sector, which got rebounded after that, has seen a market cap of 66,000 crore. So this is pessimism versus optimism. We are reaching towards optimism now, and 1 year and basket is up 3x. Even if bought staggered, मतलब अगर मैं बॉटम पे नहीं भी खरीदता था, चलो मैंने स्टैगर्ड होके खरीदा, डर के मारे बार बार खरीदा, तो भी वो 1.5 से 2 गुना हो गया. हमारे स्टॉक जो रिकमेंड किए वही 2 गुना से ज्यादा हो गया इसमें. Average room rent is now up 8,000 plus. If anyone of you is traveling, you would know कि room मिल नहीं रहे.
occupancy is 70-75%. Rooms not available at leisure locations. अगर कहीं घूमने फिरने की जगह पे जाना है तो room भी available नहीं. Everyone wants to own a hotel stock or book a hotel. So has the peak happened? I don't know. Maybe hotel sector में अभी और cream बाकी है क्योंकि वो peak अभी आया नहीं है. Peak revenue, peak profit वो सब अभी आया नहीं है, तो शायद उसको थोड़ा time है ऐसा लगता है. But let's see. So this is how the things change. Buying the Pessimism delivers so beautifully without much botheration. If you are able to control your emotions, if you are able to control your behavior, it's very rewarding then. And look at some of the properties. They are really awesome. Look at their photographs. This is Oberoi Rajvilas Jaipur. Oh, this is so beautiful. Owning one hotel itself will cost you a couple of thousand crores, and the entire sector was available at 19,000 crores that time. And I did tweet actually during that time. So May 2021, I tweeted and I asked people. I ran a poll campaign on Twitter. I said that if COVID is finished today, what is the first thing that you would plan to do? And it was almost 1 year. COVID was started in 2020 March in India, and it was almost 15 months. I wanted to check with others on with my friends on Twitter because I know from my family, from my friends, everybody wanted to travel. So I thought that let me check to the larger audience. What did they say? Almost 71% say travel with family, and then 12% said will go to office, and I am homely now. I'm going to stay at home. 16%. 1,000 people voted for this. So it was very clear, very obvious that people do want to travel outside. So this is the bottom which is in making. Again, I thank to them, and I mentioned about it, saying that we can imagine what is coming once pandemic is over. Tighten your seat belts for travel, hospitality, hotel, resort, amusement, tourism related companies. So it was evident, and it has happened actually that way, played out very beautifully. Again in May 2021, this was again visible. So Airbnb actually tweeted something, and they were talking about, because there the wave has come at different point of time, and they could see now the requirement was going up. So I mentioned that I'm reasonably sure that it will come with a bang, that is the travel, and so much abundance that the tour, travel, hotel, resort, air, hospitality industry in general won't be able to handle. And that is what is visible now in 2022. Then Puneet Chatwal, when he was doing a conference call last year in June, who is the MD of Indian Hotels, one analyst in the conference call asked the parts to Puneet, are you bullish on hotel stock? Rakesh Jhunjhunwala was quoted recently. Now, this is a foolish question to ask to MD, but that is how the analysts would do, rather than focusing the underlying value and the pessimism which is there. If we start asking about the stock price, because that is driving our entire mindset, we may get into the completely wrong direction. Now, some of the comparisons of hotel stocks, we have tweeted this also, some data of the companies during that period and later on. Then I traveled in Mahabaleshwar. I could see that rates were going up, and this was again September 2021. Still, there was a lot of room since then. Stock have done pretty well from that time also. So it's not that in May, June at the bottom you have to buy. As I said, that even if it had bought in a staggered manner, it delivered handsomely. And some random observations. So as I mentioned in the framework, when the entire industry struggles, the fight is for the survival. And when the fight is for the survival, you will put your all acts together. That is visible in this industry. They started bringing down their costs, and there were a lot of things which were visible in their annual reports, in their con calls. They were saying that how some of the costs, they have actually restructured their entire operations, and some of the costs will never come back, to the tune of 15-20% savings in the cost. This is a huge cost saving. It's going to impact their business once they start getting business. So once the business is back, and if they could restructure during this time when the struggle was going on and they are going to survive, they'll make money like anything. And that is what is visible now. The results are telling all the stories. Now,
buying the pessimism. This is another extreme. So one was negatively impacted. This company and sector was positively impacted. So should I invest in video communications company in October 2020? Because that was the second wave peak in the USA. Just give me a minute. So this was the peak of, because this was positively impacted. So peak of COVID, and this is positively impacted means the stock will move up. So that has actually happened. This was the second wave. This was the third wave. Rather third wave actually. I mentioned it wrong. It's not second. It was the third wave. So third wave in the USA was in October to December. And look at October 2020. The stock has made a peak. So peak here, because there was a complete optimism related with Zoom video communication listed in USA. Again, this is not a recommendation. We could see what has happened. We are evaluating that only as a part of the case study. So number of cases peaked in third wave in USA, and the price peaked of Zoom video communications during that time. And now stock is down 83%. 559 was the price, and today it is less than $100. So the entire scenario got changed. Everybody was talking about how Zoom is positively impacted. Schools were operating on Zoom platform. Offices were operating on Zoom platform. We were doing all our sessions on Zoom platform. In fact, this session is going on Zoom platform. This continues to be on Zoom platform. But when the peak has happened of the wave where it was positively impacted, it has seen the peak over here as well. So it has seen its peak revenue, peak profit, peak margin, peak stock price, and then the stock got crashed. Buying the pessimism. Now we are moving to another case study wherein we are going in 2009, as if we are standing in 2009 and there is no history beyond 2009 available to us till 2022. And should I invest in this windmill company? I am talking about the company which was Suzlon, and and what has happened in 2007. So we are talking about 2009 crash. And we have seen some of the things which are already there on the table. So Suzlon wins takeover battle. So it wanted to acquire a company in Europe called RE Power. And when this news came in, let me tell you, it was celebrated in the market. And without understanding, and if you see those videos of 2007 June, when this news was flashed, everybody is talking about this big acquisition because it was much bigger than the size of Suzlon. It was in foreign country, but we are not understanding the kind of risk which will come along with this acquisition. And such news with a frenzy behavior more often lead to disappointment later. Need to be very, very careful when these things happen. And when this positive news are there, it becomes difficult for investors to save themselves from getting attracted to the stocks. Now, not only that, so after 2 months, Suzlon announces FCCB issue. They declared that they are going to raise more funds just after a couple of months. So what has happened with Suzlon stock from 2008 when the results came and it has seen the peak at 424. Now it is at 10 rupees 65 paisa. So the peak has come with the peak result. 2008 Jan result came, December result came, and couple of days after that the peak has happened. So it registered 66% annual growth in megawatt sales. Reported EBITDA profit of 53%, very high EBITDA profit. If you understand this, you would appreciate that. So a very high EBITDA profit percentage. An order book of $4.3 billion. It's a huge order book that they talked about compared to their size of that year. So it was around 12,000 crore market cap, 12,000 crore annual revenue, 12,000 crore annual revenue. Compared to that order book of 4.3 billion was telling you that huge growth is coming in this company. But we are standing in 2009 now, and we are standing in 2008. We have results to 2007 only, which is in yellow. We are not having any subsequent results. Can we identify? This is a part of my larger presentation. I have taken some slides from there to demonstrate that if we could read something out of their annual report and make our
proper judgment. If you look at the operating cash flow, because it is manufacturing company, it is selling windmills. Now look at operating cash flow, consistently negative, and such a large negative number, and very small compared to their profit after tax. Profit after tax is very positive, huge number, it's growing rapidly, but operating cash flow is not growing. तो बेसिकली अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं आया ना, तो कैश नहीं आया कंपनी में. कैश नहीं आया तो कभी ना कभी तो मरने वाला है. ये चलने वाला नहीं है ये धंधा पर, ये कभी मरेगा. जब मरेगा तो बहुत बुरा मरेगा. So you are standing in 2008, you got number till 2017, so 2007 March, and you could see that all these are red signals. None are green because all are less than PAT. I would consider a PAT, cash operating cash flow equivalent to PAT as green, but it is nowhere near also during all these years. And again, some more inputs from their cash flow, balance sheet, and P&L and key ratios. If you look at operating cash flow, we already talked about it. Investing or rather financing cash flow. So they are raising continuously funds. तो पैसा तो रेस कर रहे हैं मार्केट से, है ना, और कहाँ डाल रहे हैं, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसके साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब वो मरण की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना. अब इन्वेस्टमेंट इज सब्सिडरी देखो तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है. 527 करोड़ दे इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी इन 2007. So this is not a good thing. Again, loans and advances given to subsidiaries 269 crore, almost 800 crores were given to subsidiaries. So it's not a good thing. Again, subsequent years the amount were larger, but since you are standing at the peak price, you could see only up to here. Can you make out कि यहाँ पे अपने को risk बहुत ज़्यादा है? So you would be able to make out with all these parameters. Now I am coming to the homework, buying the pessimism. Whistleblower allegations against Infosys. So what should I do? So what you have to do is find out what has actually happened. जब वो pessimism हुआ था, जब वो whistleblower का allegation हुआ था, so find out what has actually happened. And you again consider this similar to the previous case study of Suzlon. आपके पास subsequent information नहीं है, उस दिन पे खड़े हो जब ये whistleblower का allegation आया. Should I invest or not? List 3 reasons to decline Infosys during the fall. तो ये स्टॉक 800 850 रुपए था, सडनली वो 650 620 630 आ गया था. इतना बड़ा स्टॉक है, इतना बड़ा उसमें गैप डाउन हुआ था, सो आपको बढ़िया प्राइस मिल रहा है. सो लिस्ट 3 reasons to decline Infosys during this fall, and list 3 reasons, and all has to be rational. List 3 reasons to consider Infosys during the fall. कि क्यों डालूं या क्यों ना डालूं, and what should be the final decision based on rational thinking. मैं rational thinking रखूंगा और सोचूंगा कि क्या हुआ. Just to add you, to make you little biased, जब ये फॉल हुआ इतना बड़ा, we recommended this company. कुछ जरूरत ही नहीं थी ज्यादा सोचने की. आप बोलोगे विसल ब्लोअर का कंप्लेन है, सर हिस्ट्री देखिए वो कंपनी का, जिसके प्रमोटर्स में मूर्ति जैसे लोग हैं, नंदन नीलेकनी जैसे लोग हैं, और वो बोर्ड पे थे. इनफैक्ट नंदन नीलेकनी चेयरमैन थे उसके बोर्ड के. अगर वो लोग वहां पे हैं, आपको लगता है वो बोर्ड ये सब नॉनसेंस अलाउ करेगा जो एलिगेशंस लगाए थे? दे विल, अगर वो सही है तो मतलब ये बोर्ड फिर वो बोर्ड हो गई. तो बहुत ही इजी डिसीजन था ये. whatever is the decision, can I generalize the same to other similar companies? तो कहीं और अगर ऐसा पेसिमिज्म आए जहाँ पे विसल ब्लोअर का एलिगेशन हो, तो क्या मैं ये जो यहाँ पे इन्फोसिस का केस स्टडी से सीखा हूँ वो उधर अप्लाई कर दूं क्या? वो भी देखना चाहिए अपने को, क्या उस तरह का सेम एनवायरनमेंट है या नहीं. So this is in summary. It is mostly rewarding to be positive during pessimism. We need to have the ability, a very important point, we need to have the ability to distinguish between green and red. Green and red में ability difference मतलब बहुत ही सिंपल है. जब मार्केट ग्रीन में हो ना, उसको रेड देखना आना चाहिए, और जब मार्केट रेड में हो ना, उसको ग्रीन देखना आना चाहिए. जिस दिन ये आएगा वो बहुत फायदा करेगा. मतलब जब मार्केट ग्रीन में है, मतलब वो बढ़ रहा है, तो आपको डर लगना चाहिए, बजाय कि मन में गुदगुदी हो रही है कि वाह मेरा तो स्टॉक इतना बढ़ गया है, पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया है. आपको रिस्क दिखना चाहिए उस टाइम कि ये बढ़ रहा है, मेरे को नुकसान हो सकता है आने वाले समय, तो मैं क्या करूं अभी हाल, वो सोचना चाहिए, बजाय कि और खरीदने के और उसको ग्रीन को और ग्रीन करने के. उसका कोई फायदा नहीं होगा. और जब रेड आ रहा है, जब मार्केट गिर रहा है, बहुत ज्यादा रेड दिख रहा है, तो उस टाइम डरने के बजाय we need to have that ability to think constructively, positively, with a rational approach, so that you see that as a green, that as an opportunity, and start looking at
acquisition of these stocks. Then avoid companies with corporate governance issues, like fall right after IT raids. This could be a trap, especially in companies with poor corporate governance history. अगर बहुत corporate governance का history खराब है, तो वो IT rates की वजह से जो fall हुआ है, this could be a problem in long term. Focus on businesses, health of the organization, balance sheet strength, and cash flow. These very critical items. Check the survivability of the company. That test we have seen earlier. Set clearly defined milestones and measure the performance against that. If things are not moving as per expectation, then reconsider. तो आपने बना लिया कि यार मैंने होटल के स्टॉक्स लेने हैं, अभी आप देखो उसके कि यार आपने बोला था ये मैंने ये चीजें, ये परफॉर्मेंस के मेरे क्राइटेरिया हैं, ये माइलस्टोन्स हैं, इसका कॉस्ट कम होना चाहिए, इसका रेवेन्यू में चेंज होना चाहिए, इसका कोविड का इम्पैक्ट कम होना चाहिए, कंसोलिडेशन होते हुए दिखना चाहिए. अगर वो हो रहे हैं आपको दिखते हुए, आप बने रहो सेक्टर में, पैसा बनते जाएगा. डू नॉट गेट पर्टर्ब और डिस्टर्ब व्हेन अदर्स मेकिंग मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स. अरे आपका टाइम आएगा तो भरपूर आएगा. 2017 में 18 में जब मैं वो इक्का वाला स्टोरी जो बता रहा था, उस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर फाइनेंशियल सेक्टर्स वाज डूइंग फिनोमिनली, बहुत ही अच्छा कर रहा था. मतलब 2018 में हमने अपना सर्विस लॉन्च किया था और हमको बहुत कमेंट आए थे क्योंकि हमने फाइनेंशियल सेक्टर से एक भी स्टॉक नहीं दिया था. क्यों नहीं दिया? तो हमने कहा भाई हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है यहाँ पे. वो ग्रीन और ग्रीन होते हुए दिख रहा है तो बड़ा मुश्किल है फिर तो, और जब करेक्शन आएगा तो बहुत ही सीवियर हो सकता है. और वो हुआ, काफी सारे कंपनीज जो थे उसमें करेक्ट हुए और वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए. तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे कमा रहे हैं तो कमाने दो, फैंटास्टिक, विश देम बेस्ट. आपका जब टाइम आएगा यू विल मेक गुड मनी. पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बहुत पेशेंस रखिए, पैसा तो बनेगा ही फिर. Again in nutshell, about ourselves, and these are my contact details. Thank you, and over to you, Ishmael. Thank you for the wonderful presentation, sir. I'll just open the chat box below. Just a minute. Just open the chat box and we'll take some questions. And I also have some questions prepared because I enjoyed the presentation very much. Thank you so much. Right. Can we just thank sir for the wonderful presentation in the chat box below? Right. It's almost 600 attendance today. So very, very heartening attendance. Right. Sir, I just had a couple of questions. So one of the questions was that how to actually differentiate between temporary disruption and permanent disruption. As an example, like today we are seeing companies like Exide and Amaron, to lead acid battery banani, and these companies like their multiples have just gone for a toss. And secondly, because electric vehicles are coming in and batteries are like 50% of the entire cost of a vehicle. So how can one investor differentiate between that, whether this is temporary disruption or permanent disruption? परमानेंट ही लग रहा है, क्योंकि अभी पूरा डायरेक्शन ही बिजनेस का चेंज हो रहा है ईवी के लिए. और वो जो हमारा लीड बेस जो बैटरीज था ना, वो तो मुझे नहीं दिखता है कि वो इतना यूज होगा या उसका इम्पैक्ट होगा, unless until they change their business model and they come into these batteries, which is not very easy to replicate. But वो तो दिख रहा है मुझे. Right. Description. Right. And so linked to this is like in 2017-18 we saw that how financials like something like Edelweiss, Piramal, मतलब क्या stories बनती थी. ये तो अगले HDFC बैंक है, 50% ग्रोथ चल रही है. So HDFC से डर नहीं लगता है, अगली HDFC से बहुत डर लगता है. आजकल ये चीजें डर लगता है. Right, right. So what do you think of financials as a sector today, whether the credit recovery or whether the valuations of the sector has bottomed out? Yeah, absolutely. It looks very good actually. Right. It looks good. It's an interesting sector, of course. और अच्छा करना चाहिए. Right, right. And sir, इसमें आप what type of data points will you look at कि credit growth में recovery आ रही है या फिर asset quality improve हो रही है, तो just some elaboration. सब कुछ है. देखो सारी चीजें जब होती है ना, जब सेक्टर बहुत खराब टाइम से जाता है, तो जब अच्छी चीजें होती है तो सारी एक साथ एक एक करके अच्छी होने लगती है. तो आपको है ना क्रेडिट ग्रोथ भी मिलेगा, आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑलरेडी मिल रही है ना, बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिख रही है, वो भी पॉजिटिव है. जब आपका कैपेक्स हो रहा है कंपनीज में तो उनको कहीं ना कहीं बैंक्स के पास जाना ही होगा.
और फिर जब सैलरीज बढ़ रही हैं और लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल आर गोइंग फॉर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज अगेन, इट विल हेल्प द कंपनीज विच आर लैंडिंग टू द रियल एस्टेट सेक्टर और टू द इंडिविजुअल्स। तो वो ग्रोथ भी वहां पे आने वाली है। तो पूरा फिर इकोनॉमी में जो एक शिफ्ट आता है ना, वो गियर फिर टॉप गियर पे लगना शुरू हो जाता है। Right, right. And I think so linked to this was one of the questions that I had is ki like have there been any experiences where you bought the pessimism and actually the pessimism ended up being justified in that stock? अभी तक तो ऐसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सोच समझ के लेते हैं, स्ट्रेगर्ड भी करते हैं कभी कभी। और क्लाइंट्स को रिकमेंड करते समय तो 100 बार सोचते हैं कि यार अपना ले लिया ना, नुकसान हो जाएगा चलेगा, क्लाइंट्स का नुकसान होगा ना तो बहुत हर्ट करेगा। तो कोशिश करते हैं कि हम पेसिमिज्म में लें, और पेसिमिज्म में अगर वेट कर दें ना, पेशेंस रखें हम, तो बहुत इजी होता है। लेकिन वो हर क्लाइंट्स को हम पेशेंस करवा पाए ये जरूरी नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि टीच करें उनको। सो पेशेंस बहुत चाहिए इन चीज़ों में, है ना। स्टॉक्स तो करेक्ट होंगे, आप जो बोल रहे हैं ना बराबर बोल रहे हैं कि आप यू एंड अप जस्टिफाइंग। तो मे बी इफ्का अगर खरीद रहे तो आप जस्टिफाई कर रहे थे, नहीं यार ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो गया तो सब बढ़िया दिखता है ना, 4-5 गुना हो गया तो अच्छा दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तब तक तो जस्टिफाई कर रहे थे ना, तब तक तो Right, आप जस्टिफाई कर रहे थे, बट वो तो सेक्टर आपको दिख रहा था, पूरा सेक्टर ही खराब हो गया था। और वो right, कंटिन्यूस, हमेशा के लिए कोई चीज खराब नहीं होगी अगर वो डिस्ट्रप्शन नहीं है, परमानेंट डिस्ट्रप्शन नहीं है। दवाइयां तो खाओगी, दवाइयों वाला सेगमेंट तो कभी परमानेंट डिस्ट्रप्शन नहीं दिखेगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, आइडियल सिचुएशन, जब हम किसी को भी दवाई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो पेन एरिया से जा रहा है तो कभी ना कभी आपको बढ़िया वैल्यू मिलेगी और फिर उसमें अच्छा पैसे बनने का मौका आ जाएगा। right, right. So this kind of like reminds me of that basically buying great companies when they are going through a temporary period of करेक्ट, वेरी राइट, वेरी राइट। मतलब पीआई इंडस्ट्रीज जैसे आपको पता ही सिक्लिकलिटी एग्रो की, या करेक्ट। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। राइट, राइट, अरे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, अभी पेन से जा रहा है, अभी कोई बात नहीं करना चाहता है उस सेक्टर की। कभी ना कभी आएगा, वो रिबाउंड होगा, फिर सब लोग उसकी बात करेंगे, फिर बढ़िया उसके वैल्यूएशन आने शुरू हो जाएंगे। और क्या है, जब न्यूज खराब आती है ना तो सब खराब आती है, वो बोलते हैं अरे वो स्टील का प्राइस भी बढ़ गया है, इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ये प्राइस कैसे बढ़ाएगा। राइट, तो वो सब चीजें खराब होती है। क्रूड का प्राइस भी बढ़ गया है, अभी तो क्या है, लोग खरीदेंगे ही नहीं व्हीकल। राइट। एंड एक्चुअली में धीरे धीरे करके लाइक व्हाट आई हैव बीन सीइंग ऑन द रोड्स इन दिल्ली, अ लॉट ऑफ न्यू व्हीकल्स आर कमिंग इन, तो जो भी नए नए मॉडल्स हैं काफी देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली फैमिली में किसी ने कार बुक करी थी तो उसको 4 मंथ्स का इस टाइम पे वेटिंग पीरियड चल रहा है। वाह। राइट, एंड आई थिंक वो पार्टली बिकॉज ऑफ सेमी कंडक्टर शॉर्टेज एज वेल, बट सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी है। राइट, राइट, बट जो उनकी ऑर्डर बैकलॉग है शायद से बहुत ज्यादा स्वेल कर रही है इस टाइम पे। राइट। यस। Sir, one question was linked to this. Ki, how do you view the importance of allocation while buying pessimism? That whether a portfolio which is like has a lot of pessimistic stocks where basically valuations are too cheap right now. So whether it's a bet ki 6-7 sectors ऐसे हैं या 6-7 companies ऐसी हैं जहाँ पे लगता है कि valuations bottomed out है, and if 2 or 3 of them work, then the portfolio level returns will look wonderful. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो क्या है ना, पेसिमिज्म की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऐसा तो करना नहीं है हमें कि पूरा पैसा वहां अलोकेट कर दिया, क्योंकि ये लंबे समय तक पेन भी हो सकता है ना। और आपका पेशेंस जवाब दे सकता है, और आपको अगर पेशेंस जवाब दे गया ना और आपने लॉस बुक किया तो बहुत खराब होगा। सो आप क्या करो, आप 2-3 अप्रोच है। एक तो जो अलोकेशन है वो लिमिटेड रखो, 5%, 7%, मैक्सिमम 10% काइंड ऑफ अलोकेशन डालो उसमें। और हो सके ना तो बास्केट बनाओ, लाइक होटल का हमने बास्केट बना दिया, है ना। तो वो बास्केट अप्रोच भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा दिख रहा है तो आप बास्केट बना दो। और हो सकता है कि सिर्फ फॉर एग्जांपल होटल में अभी हमें पता नहीं था कि कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। गो बैक इन 2021 अप्रैल व्हेन द कोविड वाज एट इट्स पीक, आपको पता नहीं है कि कंपनी सर्वाइव करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो आपका पूरा पैसा जीरो हो सकता है उसमें। तो स्पेशली डेट वाला लेवल जो मैंने बोला था, अगर वो नहीं है तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। फिर भी उसके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि जो मिनिमम चीजें हैं वो चलती रहे। अगर वो भी नहीं होगा तो और प्रॉब्लम होगा। सो यू कीप सर्टन थिंग्स इन चेक एंड ऑल्सो क्रिएट ए बास्केट। सारे 10 के 10 कंपनी मर जाएंगे, सारे 5 के 5 कंपनी मर जाएंगे, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। और पैसा बनेगा ना तो किस में बन जाएगा ज्यादा वो भी नहीं पता है आपको। तो आप एक इक्वल अलोकेशन डाल दो, या जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा कर दो, बाकी में थोड़ा कम कर दो, वो सब बैलेंस आउट करके आप बना सकते हो।
बट बास्केट अप्रोच बहुत अच्छे से काम करता है, और अलोकेशंस का हमको ध्यान रखना चाहिए हमारे रिस्क पर्सपेक्टिव से, कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। Right, right. I think that's a good answer, sir. क्योंकि वो at the end of the day, it's like you're buying a lottery ticket with low downside, six, Yes, 7 lottery tickets. correct. Right, right. It's not actually lottery, which is Right, you are playing blind, right, right, because there is some rational thinking behind it, and you know that ये survive तो करेगा सेक्टर, डिसरप्शन नहीं है, डेट ज्यादा नहीं है, और आपका कैश फ्लो आ सकता है अगर ठीक हुई चीजें, तो वो हुआ तो फिर देन यू मेक लॉट ऑफ मनी। right, sir. Right. So, linked to this, I had two questions. So first, I'll start with this one. That how important are how important is getting the starting valuations right? Even maybe a company is not going through that pessimistic phase. Maybe it comes under that कि मतलब आप ऐसी company ले लो which is basically at reasonable prices. So how important is getting the starting valuation right? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो आप जो पैसा बनाते हो ना, वो उसी पे ही बनता है जिस प्राइस पे आप दे रहे हो, जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो। अगर आप बहुत ऊंचे प्राइस पे खरीद रहे हो ना, आपके चांसेस जो पैसा बनाने के थोड़े कम हो जाते हैं, है ना। ग्रोथ आ गई तो बहुत अच्छा है, सब अच्छा लगेगा, आप मल्टीपैकर भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप गलत टाइम पे फंस गए उसमें और गलत वैल्यूएशन पे फंस गए उसमें, तो कंपनी भले ही इन्फोसिस हो, अगर आपने वो ईयर 2000 में खरीदा है ना, वो प्राइस आने में उसको 20 साल लग गए। 2020 में इट सॉ दैट प्राइस अगेन ना, 20 साल लग गए, 10 साल लग गए वो पीक वैल्यूएशंस में आने में, क्योंकि उस सेक्टर का फ्रिंजीनेस था। तो वैल्यूएशंस तो बहुत क्रिटिकल है अगर आप किसी भी इसमें जा रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस उतने क्रिटिकल नहीं रहते जब आप पेसिमिज्म में खरीदते हो, क्योंकि वहां तो सब पूरा सेक्टर ही मरा पड़ा है। आपको 19,000 करोड़ में मैं बता रहा था 55,000 रूम्स के होटल्स मिल रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल रास्ते का माल सस्ते में है। तो Right, पेसिमिज्म, मतलब पेसिमिज्म होगा तो वैल्यूएशंस तो किलिंग मिलेंगे आपको, इतने इतने सस्ते मिलेंगे, right, right. वो चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। And so one more question, because since we're buying businesses which keep evolving, so suppose if we buy something like just as an example, not a recommendation. Suppose if someone bought an APL Apollo in 2017-18 के आसपास, at that point of time, value-added products which are higher margin business was a very low portion of the business, which has increased over a 3 to 4 years period of time. Correct. So how will you adjust this framework that a business is moving from a commodity business to maybe a semi-commoditized to a branded player in this framework? If I just Yeah, that also works. So people can make money in such cases as well. If you see that there is a transition which is happening in the product of the company, from a commodity business to semi-commodity business to more branded business, wherein there is a demand push, then you will definitely make money. But हर केस में ऐसा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है वो, तो बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पिडिलाइट इन 90s, है ना, तो पिडिलाइट उसके पहले क्या बनाता है? पिडिलाइट बेसिकली जो प्रोडक्ट बनाता है ना, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है ना। वो किसके लिए प्रोडक्ट है? पिडिलाइट का फेविकॉल है। फेविकॉल मतलब कारपेंटर यूज करता है, प्राइमरीली कारपेंटर का प्रोडक्ट है। बट उसने ब्यूटीफुली वो मार्केट किया, उसका कमोडिटी प्रोडक्ट से उसको पहले सेमी कमोडिटी में लेके आया और कंप्लीटली ब्रांडेड हो गया। वैसा बहुत सारी और कंपनी ने भी कोशिश किया, बट नोबडी इज सक्सेसफुल, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का क्वालिटी कितना अच्छा है, मैनेजमेंट का बैंडविड्थ कितना बढ़िया है, मैनेजमेंट का विजन कैसा है, और फिर वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है उस पर, और कैसा उसका परसेप्शन है मार्केट में। एंड देन ऑफ कोर्स अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो देन मेक लॉट ऑफ मनी। पिडिलाइट में कितना बड़ा पैसा बनाया देखिए, ह्यूज, इतने सालों में बना। एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग अगेन सेइंग दैट पिडिलाइट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीद लो जाके अभी, ये बहुत सस्ता है या बहुत महंगा है, वो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ द जर्नी वाज। इट कैन बी वेरी lucrative जर्नी फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो जो लोग बोलते हैं ना हमने 15 साल स्टॉक को ओन किया, 20 साल ओन किया, सारे स्टॉक ऐसे नहीं होते जो पिडिलाइट हो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो डेड हो जाते हैं, आपके पोर्टफोलियो में जीरो हो जाते हैं, तो आपको इसलिए वैल्यूएशन बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। Right, sir, right. I think one of the case studies which I think so linked to this next question is that actually when we look at commodity companies, जैसे I think वो जो poly films वाली companies भी I think Cosmo Films or Polyplex, these type of companies. I remember I think the co-founder of Aurum, they are like the other sir, what's his name? जितेन Yeah, Niteen sir, so I think one of his presentations 2 or 3 years ago, he talked about this sector. correct. So, sir, linked to this is how important is, suppose if I'm buying a commodity company right now, just as an example.
So how important is the fact कि शायद से आज commodity prices historic lows पे हों pessimism के लिए, या फिर अगर commodity prices are at high, so anyways valuation will be out of whack, and any one case study through which you can explain this. अरे वो तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है जितेन का, Right, उन्होंने सीएफ इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है। इनफैक्ट वो प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिया ना, वो हम जब पहले सेशन किया करते थे पूना में, दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग जितेन, सो 2008 से आई यूज्ड टू कंडक्ट फ्री इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशंस इन पुणे। हर मंथ हम वो सेशंस करते थे, just to interact with investors, educate them, talk to them, understand their perspective। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ या कोई और प्रेजेंट कर रहा है। तो वो 2015 में जितेन से जब मिले तो जितेन ने कम्युनिटी के बारे में बताया, तो थोड़ा अनबिलीवेबल था। तो हमने कहा कि प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्होंने वो प्रेजेंटेशन बनाया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही डिलीवर्ड इन आवर पुणे मीट। इट वाज एन आई ओपनर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपको बिल्कुल उल्टे तरह से देखना है। सी, आप मार्केट में क्या देखते हो कि अगर 2 का पी है तो बहुत सस्ता है और 50 का पी है तो बहुत महंगा है। यहाँ पे 50 का पी बहुत सस्ता होगा और 2 का पी मतलब बहुत महंगा हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि वहां पे जब वो 2 का पी बना रहा है तो वो पीक प्रॉफिट बना रहा होगा, एंड दैट टाइम इज द टाइम टू एग्जिट। तो उसके वैल्यूएशंस बिल्कुल ही अलग होंगे बजाय कि उस वैल्यूएशंस के, और वो डिसप्रोपोर्शनेट पैसा बनता है। ये जो सिक्लिकल और कमोडिटीज है, डिसप्रोपोर्शनेट पैसा बनता है जब बनता है। तो अगर आपने अपना टाइमिंग, आई वोंट से टाइमिंग बट द वैल्यूएशंस और जो पेसिमिज्म है उसको अगर ध्यान में रखा और उस टाइम पे लिया है वो, और आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, बिहेवियर को कंट्रोल किया है, यू मेक लॉट ऑफ मनी इन दिस सेक्टर। Right, right. And so linked to this is like, which sectors do you think currently might be going through a phase of pessimism, or an investor should like शायद से पढ़ सकते हैं उन sectors को just देखने के लिए कि यहाँ पे pessimism है, तो maybe pessimism is justified or maybe it is unjustified. हाँ देखिए, कुछ सेक्टर्स तो अभी भी हैं, जैसे कैपिटल गुड्स का एक सेक्टर है जहाँ पे लगता है कि अच्छा करना चाहिए आने वाले समय में। ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, अच्छा किया ही है, स्टॉक्स काफी बड़े भी हैं उससे, बट अभी भी मुझे लगता है कि वो 10 साल का पेन था उस सेक्टर में। 2008-9 में वो पीक हुए थे और उसके बाद से वो बहुत ही खराब कर रहे थे। तो वो एक सेक्टर है जो अभी भी अच्छा कर रहा है और करना चाहिए आने वाले समय में। उसके अलावा इंफ्रा का सेक्टर जो है वो पिछले 1-1.5 साल से ऑलमोस्ट डल है, बेरिंग फ्यू ऑफ द स्टॉक्स, तो वो शायद अच्छा करे। फाइनेंस का आपने बात किया ही है, वो एक सेक्टर जो है अच्छा है, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर। देन रियल एस्टेट जो है वो भी काफी समय बाद लाइमलाइट में आया है, अभी आया है रिसेंट, बट मुझे लगता है वो भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं वो सेक्टर में और बहुत पेन से गया है वो सेक्टर। तो शायद वो काफी कंसोलिडेशन भी हुआ है उसमें, वो सारे फैक्टर फिट इन होते हैं जो हमने बात किए थे हमारे सर्वाइवेबिलिटी वाले मैट्रिक्स में। वो सेक्टर भी एक अच्छा लगता है। Right, sir. I think like quite well, very interesting. I think कि कौन-कौन से सेक्टर्स में एक्चुअली पेन पीरियड यहीं पे ज्यादा दिख रहा है ऊपर से। ऑटोमोबाइल भी है एक्चुअली, Right. ऑटोमोबाइल में ऑटो इंसिलरीज, ऑटोमोबाइल, पूरा सेक्टर भी अभी भी पेन से जा रहा है। कब तक जाएगा किसी को पता नहीं। पहले लग रहा था कि शायद वो कोविड के समय खत्म हो जाएगा, फिर वो सेमीकंडक्टर आ गया तो अभी सेमीकंडक्टर में फंस गई कंपनियां। Right, right. I think there is also this thing जो यूक्रेन से आती है by the name of neon gas, which is Ukraine produces 70% of it, and because of disruption अब सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज शायद से और ही बढ़ जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, तो वो पता नहीं ना कहाँ कहाँ से क्या क्या मार पड़ने वाली है। तो थोड़ा भी आपको साइन ऑफ चेंज दिखे ना, तब वो मे बी दैट सेक्टर शुड बी कंसिडर्ड। So last question from my side before we take the question from the audience, क्योंकि सब बोलेंगे कि मैं ही questions पूछ रहा हूँ। So my question is that in some phases of the market, just we have seen that जो broader markets हैं, they get too optimistic. जैसे index level पे PE 30-35 की चले जाती है, ऐसा भी चीजें होती है। And during that time, like if we can take the temperature of the market in such a way, even though we are हम लोग analysis तो सारा bottoms up ही करते हैं, but can we position ourselves for such scenarios, or is it like just riding the business? नहीं देखिए, मेरे को लगता है ना इसमें तो अपने को स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है Right. सभी सिचुएशन में, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा स्टॉक ही हमें पैसा देने वाला है। वो मार्केट किधर भी जाए, है ना। अगर वो मार्केट नीचे जा रहा है और अगर हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है, वी आर मेकिंग मनी। इफ मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारा स्टॉक नीचे जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक रहें, सेक्टर स्पेसिफिक रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रॉडर मार्केट का वैल्यू तब बढ़ जाएगा जब या इंडेक्स का वैल्यू तब बढ़ जाएगा जब हम इंडेक्स फंड्स में डाल रहे हैं पैसा, है ना।
अगर हमारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, हमारी कंपनी अच्छा कर रही है, और अगर हमने सही वैल्यूएशंस पे लिया हुआ है और उनके वैल्यूएशंस को हम राइट कर रहे हैं, देन वी हैव चांस टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट अगर ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहा है, मे बी 2018-19 के बाद ब्रॉडर मार्केट ने ठीक ठीक किया था, लेकिन कुछ कंपनीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया था. अगर आप वहाँ फंस गए तो आपको शायद वो अंडर परफॉर्म सहन करना पड़ेगा, अंडर परफॉर्मेंस सहन करना पड़ेगा. लाइक सर, सो मेरा एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. सो बेसिकली लाइक मैंने एक पोर्टफोलियो बना रखा है इंटरनेशनल में, एकदम डमी पोर्टफोलियो है. तो अभी मैं उसमें बिल्कुल आई हैवंट पुट इन एनी मनी. सो I actually bought a company at 15 times earnings in that portfolio, and it's growing at some 35-40%. Free cash flow growth 35-40% आ रही है. And from 15x earnings, it has fallen to 6x earnings now because the tech factor has collapsed. And इस quarter के earnings में we reported 40% earnings growth. Wow. That's a good case then to increase the allocation in that company. देखो, अगर मार्केट गिर रहा है तो उस कारण से हमारा स्टॉक गिर गया है, सो इट गिव्स मोर चीयर टू अस कि अरे जो चीज हम खरीदना चाहते थे अभी सस्ती हो गई तो ले लो ना. सी, ऐसा है, देखो मैंने मार्केट में क्या देखा है. आप अगर दुकान पे शर्ट लेने जाते हो ना, आप बोलते हो यार कितने की है, 100 रुपए की है, 1000 रुपए की. 100 रुपए में तो शर्ट आती नहीं है, 1000 रुपए की है ना. आप बोलते हैं यार ये डिस्काउंट में मिल जाती, इसमें सेल हो जाता तो वो 900 में मिल जाए, तो 900 में मिल गई, आप खुश हो जाते हो. यहाँ पे जब 900 की आती है ना चीज, 1000 की स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में, आप दुखी हो जाते हो, यार 900 आ गया, यार मैंने तो 1000 में लिया था, अरे 900 में मिल रहा है ना, तो और लो ना. यहाँ अगर वो 1100 का 1200 हो जाए ना, तो पीपल आर वेरी हैप्पी, करे 1200 हो गया, चलो और लेते हैं. Right, right, It's just the other way around. How you would react in normal life versus how would you react in the stock market. It's just opposite. right, right. And sir, in this entire approach, do you ever use technical analysis or blend it with fundamentals, something like that, No or idea. not at all? No, no Right. idea. I stay away from that. What I don't understand. Right, right. Great, sir. I think we'll take questions from the audience. Otherwise, Sure. I can keep asking questions. So I'll just So unmute your let's keep line. the question on the industry only or general market, but avoid the stock specific questions, because then I'll not be able to handle them. Right. So I think, sir, we can take 10 to 15 questions, and just a request to the to all the tribe members, just limit your question to one per participant, and all the attendees who have raised their hands, you can sort of I'll unmute your line one by one. So first, Pratik, Surana, I'm unmuting your line. You can so basically you can ask your question. So just limit your question to one per participants. Yeah. Hi. Am I audible? Yeah, you're audible. Yeah. Thank you for the amazing session. So I have like a question on the entire, the framework. So first thing is, when you say hot stocks, those are the stock of the town, right? So everybody is talking about it. But how do you find the stocks or a sector which are actually out of favor? Do you have any screener or a filter or any framework to find such a stocks? Once you have found these stocks, how do you go on building your position in such opportunities? And what is your framework for selling? So, buying at pessimism is okay, but at optimism, do you have any framework where you exit your position? Okay. Hi, Pratik. Thank you so much. And so you have two questions. First question is how to identify those sectors, and can we have some sort of a screener? Very easy, actually, Pratik. Not very difficult. If you look at 52-week low list of the stocks, and if stocks are getting repeated from a specific sector, and don't go to entire 5,000 stocks, just select maybe top 500 stocks, and if stocks from specific sectors are getting repeated in that list, you have that sector. Okay, so then you can work further to understand वो stocks कहाँ थे और कहाँ हैं अभी और किन कारणों से है ना. You can identify those reasons and then you select that. So that's the one about identifying the stock. How do you sell? So generally selling is slightly tricky and difficult also, because if you are making money, you may get further greedy, because when you are going for selling, you will hear all good things about that sector. Say, for example, today
hotel stocks, you will hear all good things about it. Should I sell it now or should I sell it later? That's a difficult question to answer. So what we can do is we can always keep, because since I come from fundamental analysis thinking and not technical, as Ishmohit was asking me. So I don't understand technical, I don't understand chart, and I won't like to use them. Sometimes they work, sometimes they don't work for me. So I restrict myself to fundamental. I restrict myself for the answer also to fundamental. So if I am looking at from fundamental perspective, if I see that यार valuations तो अभी काफी reach हो गए हैं. For example, hotel stock का मैं बोल रहा था आपको कि 2 करोड़ रुपए का एक रूम पड़ता है अपने को, है ना, एक थंब रूल है अपना. सभी सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ थंब रूल होगा. तो अगर 2 करोड़ रुपए का एक है और अभी वो 2 करोड़ की जगह 2 करोड़ 25 लाख हो गया है या 2 करोड़ 50 लाख हो गया है, तो ऑलरेडी वो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर जा चुका है ना, वैल्यूएशन स्ट्रेच होने वाले हैं. और उसके साथ साथ जब आपको उनके कंपनी के पीक परफॉर्मेंस आना शुरू होते हैं, मतलब वो पीक रेवेन्यू, पीक प्रॉफिट एंड पीक एबिटा मार्जिन, एवरीथिंग इज गुड, है ना, तब वो आपको बहुत कंसर्न होना चाहिए. तो उस टाइम पे डेफिनेटली अपने को बढ़ाना तो नहीं चाहिए, और सेलिंग भी सोचना चाहिए. और सेलिंग में भी अभी डिफिकल्टी क्या होती है कि आप सोच रहे हो कि ये 2.5 लाख करोड़ है, 2.5 करोड़ है पर रूम का, ये बहुत एक्सपेंसिव है. यू नेवर नो, मार्केट में स्टार्ट रिवॉर्डिंग एट 5 करोड़, तो कोई रीजन लेके आएगा, कोई कुछ होगा और वैल्यूएशन और बढ़ते जाएंगे. तो आपका बड़ा क्रीम छूट सकता है वहां पे. तो मे बी आप स्टैगर्ड सेलिंग करो, है ना. मे बी जब 2.5 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गए हैं वो पर रूम के, मे बी यू सेल 10%, 15%, डोंट बाय एट ऑल ड्यूरिंग दैट टाइम. जो खरीद है उसको थैंक यू बोलो और उसको उतना स्टॉक दो, आगे बढ़ते जाओ. और अगर फिर वापस बढ़ता है तो फिर अगेन राइस पे उसको एग्जिट लो. तो वो उस तरह से ग्रेजुअल एक्सिट आप ले सकते हो. या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दो कि यार मेरा 2 करोड़ का है और आज ये राइट करके मेरा 2.5 करोड़ हो गया है, मैंने थोड़ा बेचा है, मेरे पास अभी भी 70% क्वांटिटी बढ़ा है. जिस दिन ये वापस से गिरना शुरू हुए या टाइम खराब आना शुरू हुआ, इस प्राइस पे मैं पूरा एग्जिट करूंगा. और एक और जो थर्ड स्टॉप लॉस का रूल लगाते हैं वो ये हो सकता है कि आपने पीक जो प्राइस देखा है ना, स्पेशली बड़ी कंपनीज में काम करेगा, छोटी कंपनीज में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है. पीक प्राइस जो है उससे उससे अगर वो 20-25% गिर गया ना, तो आपको एग्जिट लेना चाहिए उन कंपनीज में, अगर वो बड़ा कंपनीज है. तो छोटा कंपनीज है तो क्या है, वोलेटिलिटी आता है. बड़ा कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू थाउजेंड करोड़ का जिनका मार्केट कैप है. तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं प्रत्येक उसके. Sure. Thank you. So next question we have from the line of Niteen Sampath. I'm just unmuting your line. You can ask your question. Allow to talk. Right. Yeah. Hi, sir. This is Niteen here. Yeah. Basically, sir, I just wanted to ask you a very simple question that when you identify a sector during the pessimism, do you first identify the top companies? For example, just as an example, say for example, if you are identifying automobile sector, then is it easy for you to buy maybe a Tata Motor or a Maruti, or do you generally look at proxy companies like probably someone who's into manufacturing of axle or any auto ancillary company? You prefer which do you prefer? Because as an investor, it is very easy for when the market goes down, it is very easy for us to buy maybe a Reliance or Maruti, but for us it is very difficult to buy a mid cap and small cap in general. Hi, Hitin. So it's a good question. Hitin, it varies from individual to individual. As you rightly said, कि आपके लिए शायद एक बड़ा लार्ज कैप कंपनी को ढूंढना और इन्वेस्ट करना आसान होगा, है ना. और हमारे जैसे इन्वेस्टर जो हैं, जिनके पास जो वेले हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं, तो वो उन लोगों को कीड़ा है. तो वो हम तो क्या है, हम ढूंढते हैं ऐसा कंपनी जो छोटा भी होना तो उसमें पैसा बनना चाहिए और रिस्क कम होना चाहिए अपनी, है ना. तो हम वहां पे भी जाएंगे. तो हम जो है ना, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम वेजिटेरियन नहीं है, हम मोकाटेरियन. इस मोहित को मैंने लास्ट टाइम जब हम पुणे में मिले थे ना, तो ये मैंने टर्म बोला था, हम मोकाटेरियन है. हमें मौका चाहिए जहां पे पैसा बन सकता है ना, कंट्रोलिंग आवर रिस्क, वी वुड गो फॉर दैट.
एंड जनरली वी हैव सीन कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा है तो आपके रिवॉर्ड बहुत बड़े हो सकते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप रिटर्न नहीं देंगे, लार्ज कैप भी अच्छे रिटर्न देंगे। हमने लार्ज कैप भी रिकमेंड किया है होटल सेक्टर से, और वो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, वो भी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। बट स्मॉल कंपनीज बहुत बड़ा रिटर्न भी दे सकती है क्योंकि वो उतने स्क्विड हो जाते हैं, जब वो खराब टाइम आता है तो उनको देखने को तैयार नहीं होगा। बड़ी कंपनी का तो फिर भी ट्रेडिंग रहेगा, छोटे कंपनी में तो कुछ नहीं होगा, तो वो बहुत बहुत सस्ते मिल सकते हैं आपको। तो डिपेंड करता है कि आप किसको देखना, किसमें आप कंफर्टेबल है। अगर आप लार्ज कैप से कंफर्टेबल है और सस्ते वैल्यूएशंस हैं क्योंकि पूरा पेसिमिज्म है, तो आपको पैसा बनेगा, लेकिन शायद उतना बड़ा ना बने जितना आप मिड कैप और स्मॉल कैप से बना सकते हैं। Sure. Thank बट you. वहां पे रिस्क भी होगा फिर। Yeah, understood. Thank you, sir. I think so. One example classic is ki, like we have seen Tata Motors and Maruti, whereas Auto Ank mein there is this niche company which makes tire bead wires, Yes. Rajatan Global Wires, which has been a 20 bagger types in last 2.5 to 3 years, when the sector has been bombed out totally. Yeah. In fact, it's a miss. We went to Indore. Actually, we wanted to meet the promoter of this company, and unfortunately, that day he was not there. और जनरली हम मीट नहीं करते, लेकिन हम उससे मिलने के लिए गए थे और वो रह गया, और वो रह गया तो स्टॉक ही रह गया फिर। It became multi-bagger. We thought that it should do well. It's a good name. Right. So next question is from the line of Anand Mishra. So Anand, I've unmuted your line. You can ask. Anand, are you there? I think we'll just move on to the next participant. So next question, just a minute, I'll just lower the hand. Right. So next question we have from Vinod Kumar Das. Vinod Kumar, I've unmuted your line. You can ask. I think ऊपर से ले लो तो सेशन के टाइम पे शायद से बाय मिस्टेक हैंड रेज करा है, राइट? तो आई थिंक नीचे से एक बार यार जस्ट स्टार्ट आस्किंग. All right. So next question we have from Mahesh Soni. So Mahesh, I've unmuted your line. You can ask. Hi, thank you so much for the session, sir. My question is, do you study one business or one sector at a time or multiple businesses? And if you think studying a particular sector of business is getting very technical or boring or beyond understanding, do you then skip it, or what is your framework in that case? And then I'll just squeeze in one more question. Feel free to ignore. But if your story plays out after you buy Pessimism, if your story plays out, at what point do you decide to sell? Do you have a ballpark target in mind? Thank you so much. So Mahesh, last question first. That I already answered. Pratik ने पूछा था. I don't know if you listened to that. जी, I did. हाँ, so वो सेम ही है, एग्जिट का वही रूल रहना चाहिए. वैल्यूएशंस प्लस स्टैगर्ड एग्जिट, क्रीम बाद में नहीं तो छूट जाएगा अगर आपने जल्दी बेच दिया तो. एंड यू नेवर नो, अगर आपने इन्फोसिस का अगर 98, 99 और 2000 वाला राइट देखा होता तो वो पहले 20-30 के पी पे भी नहीं था और वो 300 के पी पे गया. अगर वो 50 के पी पे मुझे महंगा लगने लगता तो मैंने तो बहुत बड़ा ग्रोथ खो दिया होता उसमें, है ना. ऐसा सिचुएशन कहीं और भी बन सकता है. सो दैट इज अबाउट एग्जिट. अगर एक ही सेक्टर को हम स्टडी करेंगे ना तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं. वो मल्टीपल सेक्टर्स करना ही पड़ते हैं. हाँ, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड में भी फ्यू डेज और few weeks we may continue to study one sector or companies from that sector, but it so happen ऐसा बहुत ही नेचुरल है कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ लेके बैठे रहते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, और जब टाइम आता है तो फिर उसका डिसीजन लेते हैं. All right, okay. है ना. जैसे कैपिटल गुड्स में हमारा अभी लार्जेस्ट एलोकेशन है, और कैपिटल गुड्स हम 2017 से देख रहे थे, क्योंकि 2013 से मैंने बोला ना 10 साल का, तो उसमें बहुत खराब टाइम रहा है 2012-13 के बाद से. स्पेशली 2008-9 में पीक हुआ था, उसके बाद 2013 में कैपिटल गुड्स का सेक्टर पूरा खराब हो गया, और उसके बाद से वो जो खराब हुआ तो वो 2017-18 तक खराब ही था. तो वी थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन 2017-18, बट कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ थंब रूल्स हैं, कुछ शायद एक्सपीरियंस है, कुछ शायद आप गट फीलिंग बोल सकते हो,
है ना, वो हमें बोल रही थी कि नहीं यार ये अभी आया नहीं है पूरा बाहर, है ना, कुछ 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 जो फिलर्स जो चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, तो वी अवॉइडेड दैट सेक्टर अंटिल 2021 में फिर जाके उसको पिकअप किया. It worked Okay. beautifully for us. We were lucky also, I would say. All not all intelligence, but lucky भी थे. लेकिन कुछ चीजें हैं जो थंब रूल से काम करती हैं, कुछ चीजें डेटा से काम करती हैं, कुछ चीजें जो हमें थिंग्स शुड फॉल इन प्लेस ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो वो अगर इफ दे आर नॉट फॉलिंग इन प्लेस देन वी अवॉइड दैट. और कुछ जो होती है Got नो ब्रेनर होती है. अगर 2020 के पीक में आप होटल इंडस्ट्री का हालत देखें, बहुत ही बुरा था. तो यार वो तो मतलब बहुत ही क्लियर है कि यार इसमें तो पैसा बनने ही वाला है अभी, यार इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना जी सस्ता जी है. और होटल जी तो बननी होगी ना, कभी ना कभी तो चालू होंगे. हाँ, मेरे को तो ये भी बोला उस टाइम कि यार ये होटल का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि एयरबीएनबी जो है वो पूरा मार्केट खा जाएगा. अब अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा यार. एयरबीएनबी का स्टॉक नीचे डाउन हो गया, जबकि वो भी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि टेक स्टॉक ऐसा अभी जो इश्मोहित बोल रहे थे कि टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो उसमें आप देखो कि वो कहाँ से कहाँ आ गया वो स्टॉक, जबकि जी टूरिज्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया इस पीरियड में. जी बिल्कुल सर. कोई अगर इन केस वाइल्ड स्टडिंग अगर आपको कोई सेक्टर, जैसे फॉर अ नोवाइस इन्वेस्टर लाइक मी, आई फील दैट समटाइम्स आई डोंट have enough understanding of that company or that sector. It is getting too technical, or I don't have handle on say what is happening on the ground. मेरे पास contacts नहीं है to get scuttlebutt information. तो ऐसा आपके साथ होता है क्या? एंड इफ सो डू यू ड्रॉप इट और डू यू कंटिन्यू, और आपको प्लेट में रखते हैं बाद में कुछ समय बाद पढ़ेंगे, ऐसा करते हैं आप? नहीं, ऐसा अब तो नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई मिल जाता है. अभी इश्मोहित जैसे हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो वो हमें सेक्टर को समझना है तो उनसे फोन करेंगे तो वो बताएंगे हमें, और उनके पास तो नॉलेज की खदान है. तो ऐसे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2017 में जो हमने बोला था कि स्टील सेक्टर आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट, उसके पहले मुझे पैलेट के बारे में कुछ नहीं पता था, कि पैलेट दिखता कैसा है ये भी नहीं पता था. और वो फ्रेंड से कुछ समझा, कुछ पढ़ाई किया, तो समझ में आ गया. और सेक्टर इतना सस्ता हो जाता है ना उस टाइम, आपकी गलती होने के चांसेस कम होते जाते हैं. ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Right. So next question we have from very interesting name, Mr. Finding 10x. Okay. Right. I've unmuted your line. You can ask. आपको 10x मिलता है तो मुझे भी बताइएगा. Nice. I think he is there. Might have raised his hand earlier. So I'll just move forward. Right. So next question is from the next question is from Pranav Joshi. So Pranav, I've unmuted your line. You can ask. Yeah, I'm audible. Yeah, you're audible. Yeah, thanks a lot for the session, by the way, and Ishmael, thanks for for organizing these sessions. We, as a individual investor, I think ऐसे लोग तो हमें मिलेंगे भी नहीं just to interact with. But नितिन सर, हमारा एक क्वेश्चन ये था हाइपोथेटिकल, कि जैसे आपने इतना लैब्स खरीदा था अगर, तो यू सेड दैट उनका जो टर्न अराउंड हुआ था वो कोविड का गेम चेंजर था एक. Their margins peaked and their top line also grew a lot. अगर वो ना होता and you were averaging down when the stock was going through the pain, would you have booked a loss because उनका US FDA resolve नहीं हो रहा था? नॉट रियली. आपको मैं कुछ चार्ट दिख सकता है ना, तो एक मिनट जरा. सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ. दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ जी. है ना. अभी देखिए, ये इप्का लेबोरेटरी का प्राइस है. ये यहाँ कहीं तो पीक हुआ था 2014 में, और ये यहाँ कहीं बॉटम बना है इसका. इधर इधर 2-3 बार ये नीचे आया है ना. और अपना जब कोविड शुरू हुआ ना, कोविड में स्पेशली इसका जो रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे कहीं आया था 2020 के आसपास, है ना, अप्रैल मई के आसपास. 850 हो गया था ऑलरेडी, राइट. है ना. तो ये ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका था वहां से, इस बॉटम से. और वो क्यों हुआ बिफोर कोविड? बिकॉज दे वर ऑलरेडी टेकिंग सर्टन एक्शंस
which were not dependent on US FDA, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो they were growing in other markets, वो फोकस ऑलरेडी कर रहे थे। और जब आप डिफिकल्ट पीरियड से जाते हो तो आप बहुत सारे एक्शंस लेना शुरू करते हो। तो ये कंपनी भी वो कर रही थी, कॉस्ट भी रिड्यूस कर रही थी, अदर बिजनेसेस पे फोकस कर रही थी, और वो हुआ और वो रिजल्ट दे रहा था ऑलरेडी। कोविड वाज आइसिंग ऑन द केक, मतलब वो हुआ तो, और फिर तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। फिर तो यूएस एफडीए का स्पेशल क्लियरेंस मिला था उनको वो दवाई के लिए। ओके, सो बेसिकली मतलब यूएस एफडीए एक कंसर्न था, बट उसको मतलब बाकी जगहों पे फोकस कर रही थी कंपनी, एंड दे वर ग्रोइंग देयर एज वेल, सो उधर एक टर्न अराउंड आ रहा था बेसिकली। सो वी कुड प्रोबब्ली इग्नोर द यूएस एफडीए नॉट गेटिंग रिजॉल्व टू सम एक्सटेंट। See, समटाइम क्या होता है ना, एज एन इन्वेस्टर वी गेट हुक टू सर्टेन थिंग्स। तो मैं जैसे हुक थ्रू था, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि यार यूएस एफडीए रिजॉल्व हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था। अगर आप पढ़ रहे होंगे ना लगातार, तो आप रियलाइज करोगे कि वो तो ऑलरेडी एक्शन ले रहा है कि मेरा यूएस से डिपेंडेंसी कम होते जावे, है ना, और मैं दूसरे बिजनेसेस को, दूसरे ज्योग्राफीज को ग्रो करते जाऊँ, और मैं अपने कॉस्ट को रिडक्शन करूँ, और इन ज्योग्राफीज से मैं अच्छा पैसा बनाऊँ। तो वो कर रहा था और उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए थे, है ना, इसीलिए वो विजिबल थे नंबर्स में, इसीलिए वो स्टॉक प्राइस में विजिबल थे, और जो नेगेटिविटी थी वो कम होते गई फिर। और फिर एक बार अगर वो रिजॉल्व होती जाती है ना, तो फिर आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह सब आ जाते हैं, फिर फिर गेम ही चेंज हो जाता है उसके बाद फिर प्राइस में। Really insightful, sir. Thank you so much. So I think next question we have from Nipun Madan. And sir, do let me know how much time you have. So हम 5 मिनट और करते हैं up to 3 o'clock. ठीक है सर. So next question we have from Nipun Madan. So Nipun, I've unmuted your line. You can ask. Yeah, hi. Thanks for the presentation. My question is regarding like this IT industry. What is happening these days with the IT industry? So too much of pessimism is coming up, like because of this salary inflation. So moreover, this sector is basically in a structural bull run. I don't think we are going anywhere. We are going away from technology. So I was talking to HR people of Infosys, Wipro. They are saying this attrition is happening not because they are increasing the this inflation. Salary inflation is not happening because they are increasing the salary of their employees. This is happening because they are not increasing the salary of their own employees. That's why people are leaving the job. So can we consider this something like this as pessimism? Buying on pessimism? नहीं यार, अभी तो पेसिमिज्म नहीं है। 2017 में पेसिमिज्म था, अभी तो पेसिमिज्म नहीं है। अभी तो ऑप्टिमिज्म है, जैसा आप बोल रहे हो ना कि यार इसका तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, तो बढ़ने ही वाला है, तो सब दिख रहा है, और इतना सब डिजिटाइजेशन का काम है, ये अपॉर्चुनिटी तो आने ही वाली। ये थोड़ा ऑप्टिमिज्म वाली बात है। सी उसमें बढ़ सकता है, जैसे वो अभी कुछ देर पहले इसमें बता रहे थे ना, वो जैसे पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और वो एस्ट्रल पॉली का जो शायद एस्ट्रल का बात किया था आपने, एपीएल अपोलो का बात किया था, तो वो किस तरह से कमोडिटी बिजनेस से वो सेमी कमोडिटी और फिर ब्रांडेड बिजनेस की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसी तरह से वो एक अपॉर्चुनिटी का शिफ्ट था, तो वो शायद इंडियन आईटी कंपनीज में भी वो शिफ्ट होगा, और दिख रहा है शायद वो डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि ये जो डिजिटाइजेशन है, अगर वो एक बार फुल फ्लेज कर दिया गया अगले कुछ महीनों में, तो इसका जो सब्सिक्वेंट काम आने वाला है ना, वो शायद उतना बड़ा ना हो जितना आज डेवलपमेंट का काम है। एक वो रिस्क रहेगा, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खत्म हो जाएगा, ये कभी नहीं बोलता हूँ। इंडियन आईटी कंपनीज के पास बहुत काम है और रहने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता भी है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी साइज जो है ना, वो ऐसा है कि हम इनफाइनाइट सोच लें इसको और वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी, वो मुझे नहीं लगता है यार। तो वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, है ना। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कि आज ये ग्रोथ आ रही है तो ये ग्रोथ लाइन ऐसी कैसी चलने वाली है, ये तो मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं जाके पिक होगी और फिर ये थोड़ा डिक्लाइन होकर स्टेडी स्टेट में जाएगी। जब वो आएगी ना, तो फिर वो पेन शुरू हो जाएगा, तो वो मार्केट पहले से रीड करेगा इसको। तो मुझे तो वो चीज से ज्यादा डर लगता है। पेसिमिज्म वो है जब वो 2017 में था, है ना। आप यहाँ आगे क्वेश्चन ही नहीं पूछते इन्फोसिस के बारे में। हाँ, मतलब वो पेसिमिज्म होता अगर पेसिमिज्म रियली होता तो। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप किसी को बोल देते ना आईटी 2017 में कि मैं आईटी के स्टॉक खरीद रहा हूँ, वो आपको पागल ही समझता। ऐसे हालत थे, मतलब अरे क्योंकि पूरा जो फ्लो है वो सब बोल रहा है कि नहीं भाई,
आईटी तो खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आईटी तो बंद हो जाएगा इंडिया का। इंडिया के क्या करते हैं आईटी कंपनीज वाले? वो सब पुलिस है, पढ़े लिखे, और उनका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। वो तो वैल्यू एडिशन से प्रोडक्ट कंपनी करती है, सर्विसेज कुछ नहीं करती। सर्विसेज क्या करती है? सिर्फ बॉडी शॉपिंग करती है। तो भाई मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है, मुझे पता है कि वैल्यू एडिशन है या नहीं। वो कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन वो जब उस स्टॉक की पिटाई शुरू होगी, उस सेक्टर की पिटाई शुरू होगी ना, तो कोई कुछ उस बारे में बात नहीं करेगा, कोई उस वैल्यूएशन के बारे में बात नहीं करेगा, और कोई इस सेक्टर के बारे में ओनरशिप लेने को तैयार नहीं होता। तब होती वो बात। सर, जब विद इन इस सेक्टर आपस में डिसरप्शन शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल ऑटो में, लाइक टाटा मोटर्स गेटिंग द प्रेफरेंस कंपेयर टू मारुति, अभी तो हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल नहीं देखा, वो भी अगर कोई तीसरी चीज आके जुड़ जाए, एथेनॉल भी जुड़ जाए, हाउ टू कैप्चर दोज थिंग्स बेसिकली? बिकॉज ऑटो आपने बोला जैसे इनफैक्ट इज गोइंग थ्रू दिस मोड, तो इसके अंदर ही आपस में, तो फिर वो बास्केट ही चूज करना सही रहेगा कि फिर मतलब हाउ टू गो? हाँ, तो मैं इसका एक छोटा आंसर, 2 पार्ट में आंसर देता हूँ। बास्केट के पहले मैं आपको एक और इंसिडेंस बताता हूँ। आइस इंजन है ना, जो इंटरनल कंबंशन इंजन जो आज ट्रेडिशनल इंजन में होते हैं हमारे कार्स में, जो पेट्रोल और डीजल बेस्ड व्हीकल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी आई थी ईयर 2000 के आसपास। इसमें मैं करेक्ट हूँ ना? गलत तो नहीं हूँ, है ना? उसे मतलब और कुछ साल पहले आई होगी, लेकिन वो वहां से प्रोमिनेंट हुई। आपको मालूम है कितने मैन्युफैक्चरर्स थे उस टाइम आइस इंजन के, जो गाड़ियां बना रहे थे? 2500 यूएस में। 2500 कार मैन्युफैक्चरर्स वर देयर फॉर आइस। कितने सरवाइव किए? 3, मेजरली 3। कौन कौन से? फोर्ड, जीएम एंड टेस्ला। बाकी सब मर गए, कोई नाम भी नहीं जानता है इसका, है ना? सिमिलरली जब आज ये नया रिवोल्यूशन आ रहा है या नया डिसरप्शन आ रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट में, बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे, बहुत सारे नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट। हाँ, उस टाइम पे और भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे आज हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ, तो ये शायद वो भी आ जाएगा। उस टाइम पे पेट्रोल और डीजल के अलावा केरोसिन के भी व्हीकल्स थे और वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई थी, वो सब खत्म हो गई। तो टेक्नोलॉजी को स्टेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के जो इम्पैक्ट है, तब वो हमें समझ में आएंगे कि ये सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे। हम वीसी फंड नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास वीसी फंड नहीं है ना? हम ये सब नहीं कर सकते कि यार किसी दादा दादी का फंड है, इंडोमेंट फंड, वहां पे पैसा डला हुआ है, वो हमको मिल गया है और हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करते रहे। वो हमारा काम नहीं है। हमें तो प्रूवन चीज चाहिए, और प्रूवन चीज चाहिए, अगर वो वैल्यूएशन सस्ता हो तो हम लें और उसको उसका उसका बेनिफिट रीप करें। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो हमें पता नहीं। हाँ, बजाय कि डायरेक्ट इन कंपनीज में पैसा डालने के, मैं तो वो उन कंपनीज में ज्यादा भरोसा करूंगा जो इनको सप्लाई करती है, है ना? मे बी वो डिस्क्रिप्शन में नहीं आएंगी। मे बी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो, लाइटिंग इक्विपमेंट सिस्टम्स हो, टायर्स हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये सेक्टर्स अभी सस्ते हैं, बट अगर मेरे को बेट लेना होगा तो मैं शायद उन पे लेना ज्यादा पसंद करूँ। या फिर मेरे को डायरेक्शन एकदम क्लियर हो गया कि यार अभी तो ये ईवी चलने वाला है, हाइड्रोजन का कोई कुछ होने वाला नहीं है, और ईवी में ये 3 कंपनी लिस्टेड है और ये अच्छा कर रही है, मैं फिर वो एक बास्केट बना लूंगा उसमें। थैंक यू। Thank you. Great. So, sir, we'll just take 2 more questions if time permits. Yeah. Sure. So, next question I'll just take from Manpreet Arora. So, Manpreet, I'm sorry, just a second. I think by mistake. Just a minute. Right. So, next question we take from Manpreet Arora. So, Manpreet, I've unmuted your line. You can ask. Can you hear me? Yes. Yeah, you're on. Yeah, thank you, Ishmohit, for the opportunity. And thank you, Nitin ji. Great presentation. And आपका वो flow chart जो आपने बना के दिखाया, I think that's a great framework decision making tool, because pessimism में क्या select करना है and क्या criteria पे select करना है is also very important. Even if so, on that basis, I wanted to ask you, what do you think about the newspaper industry in that sense? We have companies like Jagran, Dainik, they are all available at 5 times cash flows of their good years, but people are saying
print industry is probably dead. And we are seeing that they're also going online with their apps and bringing customers online, and so we are also in some way undermining the capability of these companies to reinvent themselves and move from print to online, and where online their margins may be even better because paper costs not be there, and they can eventually monetize that as well. So how do you see that from your pessimism framework? Okay, so Manpreet ji, ये बड़ा मेजर डिसरप्शन है ना न्यूज़पेपर के इंडस्ट्री में, और आपका बोलना सही है कि वो ऑनलाइन जा रहे हैं, बट ऑनलाइन का कंपटीशन है ना बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कंपटीशन कहीं से भी आ सकता है यहाँ पर, है ना। पेपर अगर मेरे को पब्लिशिंग स्टार्ट करना है तो एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। अगर मैं से 20-30 साल 40 साल पहले अगर मैंने स्टार्ट करना था पेपर को, तो एक तो एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है, और उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है, कैपिटल इंटेंसिव है, वो सब चीज़ें थी। तो वहाँ पे वो बढ़िया काम करता था। लेकिन अगर ऑनलाइन में आप जा रहे हैं ना, तो ऐसे छोटी छोटी पोर्टल्स हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। उनके साथ कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल है फिर, है ना। और आपका कहना सही है कि उनका पेपर का कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन उनके ऑनलाइन के कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो भी मैनेज करना विद द काइंड ऑफ रेवेन्यू एंड विद द कंपटीशन दैट यू हैव फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेयर्स, इट्स नॉट वेरी इजी, है ना। और वो माइंडसेट को चेंज करना प्रमोटर्स के, कि हमें वो ऑनलाइन का माइंडसेट बहुत अलग है। आज अगर आप मेरे को बोले ना कि मैं इश्मोहित जैसा एक प्लेटफॉर्म बना दूं, इसमें क्या है, मैं तो बना दूंगा, नहीं हो सकता सर, ये मेरे से नहीं हो सकता। एक यंग जो इश्मोहित का अप्रोच है, वो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता इस ऑनलाइन मॉडल के लिए, है ना। तो वो बड़ा मुश्किल है वो सोच लेके आना, तो बड़ा डिफिकल्ट है मेरे को ये देखना। क्योंकि आप देखिए, आप टाइम्स ग्रुप ने ये कोशिश किया, टाइम्स ग्रुप आप देखिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी फायरिंग भी हुआ वहाँ पे बीच में, जो मैंने सुना था। और being one of the very large player in this space, अगर वो भी स्ट्रगल करते हैं इस स्पेस में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है इसको हैंडल करना। ऐसा लगता है हमें कि इजी है एस्टेब्लिश करना, और है क्या उसमें, हम 4 वीडियो बनाते हैं और उसको डाल दें, और अगर वो व्यूवर्स आ जाए देखने लग जाए, इतना आसान नहीं है वो उसको उस कंटेंट को बनाना, और क्या मेहनत है उस पर, और क्या सोच है। सबसे ज्यादा तो सोच, वो जो सोच जो चाहिए ना, वो बड़ा मुश्किल है उसको लाना। और जब आप वो सोच लेके आएंगे और इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तो कॉस्ट भी दिखेगी फिर आपको, एक एक वीडियो बनाने के ह्यूज कॉस्ट है। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू रेप्लिकेट दैट इन ऑनलाइन। तो मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा, क्योंकि डिस्ट्रप्शन तो है वहां पे। थैंक यू नितिन जी। वन एडिशनल क्वेश्चन ऑन अ डिफरेंट सेक्टर, जो कि ऑयल एंड गैस है, and all this ESG thing happening, and a lot of funds moving out, but we still know that energy will be needed, maybe in an alternative form. 100%. But again, these companies generate humongous cash flows. Abhi to khair petrol prices are through the roof, but even if we normalize it for something, they're still probably priced. अरे मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा उस पर। देखिए, अगर वो ईवी भी आया ना, तो हमारे पास ईवी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? वो लगना तो ट्रेडिशनली है ना, आपको या तो कोयला लेके आओ या अदर प्रोडक्ट्स लेके आओ और उसको जनरेट करो इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो ईवी को बोल के कि वो ESG कंप्लायंट में बैठता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है वो कोई देखेगा नहीं, कि उसका इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रहा है। तो मैं उतना नेगेटिव नहीं रहूंगा उस सेक्टर के लिए। Thank you, Nitin. Thank you, Ishmael. Thank you. So, sir, we'll just take the last question. Sure. I think just to add to the newspaper point is कि newspaper का majority of revenue comes from advertisement. Yes. And today advertisement is moving to short form video apps. और recently एक sir newspaper aggregator है by the name of Daily Hunt, and $5 billion का valuation मिला उसमें, fundraising हुआ है. So I think it's really difficult for these newspapers to reinvent themselves. बहुत मुश्किल है, बड़ा disruption मेजर है। Right, sir. So last question we'll take from Ashunya. So Ashunya, I've unmuted your line. You can ask. Firstly, sir, thank you for a wonderful presentation. बहुत ही अच्छा presentation था, and SOIC standards का presentation था, so no question.
So one thing that I would like to ask you, आपने एक बहुत beautiful हमें flow chart बताया था, how you select a disruptor, how you go for stock which has pessimism. I want to ask you, is there a telltale sign or is there some reject criteria that you say, oh, ये stock pessimistic thinking का नहीं है, ये basket case है, this will go, this is not supposed to be touched. ऐसा, are there certain red flags or certain reject criteria which are very obvious at early stages or maybe little after early stages that people should be very careful about? देखिए, सेक्टर के बेसिस पे बोल रहे हैं या आप स्टॉक के बेसिस पे बोल रहे हैं? मैं थोड़ा ये क्लियर नहीं है. Either would do, sir. Either would do. Sector के basis पे भी या stock के basis पे भी ऐसा, or it could be a specific red flag, or it could also be a certain, like when last time SOIC did the forensics workshop, we said there's a certain mindset also you could develop. Is there some kind of a red flag mindset, or is there some kind of a telltale sign which you say इस sector में अगर दिख जाए या इस stock में दिख जाए तो be careful, ये pessimistic thinking वाला नहीं, this is a gone case stock. Absolutely, Ashwini, good point. So mostly जहाँ पर corporate governance के issues होते हैं जिन companies में, अगर वो सस्ते हैं तो भी हमें उनको टच नहीं करना चाहिए. अगर वो डिस्ट्रप्शन से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और कुछ पेसिमिज्म भी है, और वो स्टॉक जो है अलॉन्ग विद द एंटायर सेक्टर अवेलेबल है, तो भी मैं शायद उसको बास्केट में भी ना लूं, है ना. अब वो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख सकते हैं, जिसमें प्रमोटर का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, उनका डाइल्यूशन, उनका वॉक द टॉक, उन्होंने क्या किया है, वो सब चीजें हमको पता लगती हैं. मे बी एनुअल रिपोर्ट से, कॉन्फ्रेंस कॉल से, उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट किया है. अगर सस्ता होगा तो भी मैं उसको टच नहीं करूंगा, है ना. I would rather like to lose an opportunity which could be multi-bagger than saving myself from permanent damages. क्योंकि वहां मैं अगर कॉम्प्रोमाइज करूंगा ना तो कहीं और फिर मैं बुरा फंसने वाला हूँ. तो इसलिए वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो एक कंप्लीट नो है. अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो कंपनी स्टैंडर्ड पे नहीं है तो हाँ, मैनेजेबल है. अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी हम देख सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि शायद डाउटफुल केस है, मे बी वी कैन कंसिडर दोज इन ए बास्केट, बट इंडिविजुअल बेसिस पे अगर वो डाउटफुल भी है ना तो भी हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए उनसे. So, sir, as a sector level, if I may have a small add-on, as a sector level, if you say like banking sector होता है, वहाँ पे personnel we are very careful about. If RBI is saying किसी का कुछ हो रहा है, like recently we saw a bank where RBI woke up and appointed somebody. I mean, do you think these are major red flags, or this is something we should be careful about? I am not wanting to take names, so I'm pretty sure everybody knows what I'm talking about. नहीं, देखिए, अगर आरबीआई बोल रहा है और अगर इतना बड़ा एक्शन हो रहा है तो आपको तो डेफिनेटली कंसर्न होना चाहिए. और आरबीआई के बोलने के पहले, जैसे हमने एक लार्ज बैंक को कोलैप्स होते हुए देखा था, बाद में उसको पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक्वायर किया, वो तो पहले से ही पता था यार बहुत सारे लोगों को मार्केट में कि ये बैंक का रिस्क मैनेजमेंट जो कैपेबिलिटीज है वो अच्छी नहीं है ना. ये तो पता ही था सबको जो मार्केट में है. और जो रिस्क मैनेजमेंट वाले लोगों से बात करेंगे तो आपको इनपुट मिल जाएगा कि यार इसका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है. अगर कोटक और एचडीएफसी उसके लोन को रिजेक्ट करते हैं तो ये बैंक उसको लोन दे रहा है, तो आपको पता है कि यार ये रिस्क ज्यादा है. फिर यहाँ पर आप फिर उसके बाद भी अगर वो प्राइस ऊपर है और उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो तो देन यू आर गोइंग टू बर्न योर हेड्स. और वो नीचे आ रहा है, आप सोच रहे हो कि एवरेज कर लूं क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा इस उम्मीद में, तो भी आप यू आर बर्निंग योर हेड्स. आई रिमेम्बर वो 400-500 रुपए का स्टॉक था, 60 रुपए पे था, तो लोग 60 रुपए काफी दिन रहा वो, तो बोल रहे अरे नहीं 60 रुपए आ गया, सस्ता है, अभी तो ले लेते हैं क्योंकि ऊपर आ जाएगा, 400 का स्टॉक है. बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि शायद 60 का भी ना हो, वो 10 रुपए हो जाएगा तो फिर क्या करोगे. और अल्टीमेटली फिर वो लॉस बुक करते हैं, फिर इतने मेजर लॉसेस बुक करते हैं. तो आपको अगर पता है कि ये रेड फ्लैग्स हैं इन कंपनीज में, वो कंपनीज से अगर दूर रहो तो अच्छा है. क्योंकि आप जब लूज करते हैं ना पैसा तो वो परमानेंट डैमेजेस होते हैं वहां पर, वो फिर कभी रिकवर नहीं हो सकते. बिजनेस कारण से अगर स्टॉक्स गिरते हैं ना वो हमेशा रिकवर होते हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से गिरते हैं ना उनका रिकवर होना बहुत मुश्किल है. और अगर वो रिकवर हो भी जाते हैं ना तो वो वापस डैमेज होते हैं. Thanks for a very clear answer, sir. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक ये वाला आंसर आपको काफी सही